Hello, girls and boys. How's it going? Sorry, guys, I got a bit late. I had stepped out for a quick errand. थोड़ा time ही लग गया, thanks to Pune's awesome traffic. But here I am. We are live now. All right. So I see a bunch of people already joined in. कहाँ से हो? बताओ यार, थोड़ा अपने बारे में बताओ. What's going on? Manish Patil. Hey Manish, how are you? Where are you logging in from? Jack Sparrow. सही. हाँ जी, जैक स्पैरो. कहाँ से हो? इंदौर एमपी. हरीश पटेल. Hey Harish, how's it going? Vyom, sir, I'm in Symbiosis Pune. I'm confused about web development and data science. करते हैं questions भी start करते हैं अभी. Let's just figure out. Jack Sparrow is from Karachi. कराची की चिड़िया आई हैं आज हमारे पास. Casual Nepal. Oh, nice. Very good. Pratik, sir, I'm from Indore, MP, software tester. Good. Bhanu Shankar, good evening, sir. How are you, sir? I'm doing very good, sir. Thank you very much. And IT Hub Bangalore, Rahul. Arey, kya haal chal, Rahul? How's it going? Faizan from Poland. Oh, Faizan, good to see you. Kundan Kumar Patna. Always, how are you doing, sir? I'm doing very good, very good. Thank you very much. Okay, so just as people are joining in, I wanted to start from one announcement. I think आप लोगों ने शायद community post भी देखा होगा, but not next week, but the week after that, I will be doing a live, not live. I will be putting out a video on resume review. Okay, so I will put the link to the post also. But what you should do is, if you want to get your resume reviewed from me, I will give you the email ID. Send your resume at that email ID. Abstract out your name, your current organization, वो सब details नहीं चाहिए, right? And send me your resume. Out of all the resumes that I receive, I'll select maybe 10 to 15 of them, and then I'll review them. I'll give you my feedback, और उसका एक वीडियो बना के we will put it on the channel that others can also have a look and they can also learn from there. So give me 1 minute. मैं वो post का link भी डाल देता हूँ यहाँ पे, so that it will be easier for you guys, right? But long story short, if you want to get your resume reviewed, then this is a chance how to do it. Okay, एक मिनट, कैसे डालते हैं कम्युनिटी. ओके, हाँ चलो ठीक है. सेव इमेज एज, चलो इमेज डोल के डाल देता हूँ. बट इफ यू गो टू द कम्युनिटी, राइट, वहां पे आपको दिख जाएगा. ओके, रेज्यूमे. वेब पीडी क्यों जाता है यार? वेब पीडी नहीं चाहिए अपने को, तो पिक्चर चाहिए. ओके, लेट्स ट्राई दिस. Just give me 1 minute. Let me save it. Let me share the details here. Okay. Just 1 minute. Resume. Okay. And then
अरे इसमें पोस्ट नहीं कर सकते क्या? अरे यार, resume.png। ओके ओके, पोस्ट नहीं कर सकते इसमें, अटैचमेंट नहीं डाल सकते, तो ठीक है, दैट्स फाइन। सविंदर पुरी team@gmail.com, ये ईमेल आईडी है। At this email ID you can send in your resume, abstract out the details and send in this resume. नेक्स्ट 3-4 दिन में जितने रेज्यूमेज आ जाएंगे उनमें से कुछ सिलेक्ट करके फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। सो नेक्स्ट वीक फ्राइडे को वो वीडियो आएगा। ओके, ऑलराइट। सो ये मैंने डाल दिया है, this one savinderpuri@gmail.com। यूज दिस email ID, यहाँ पे अपना रेज्यूमे भेजो। व्हेन यू सेंड इन योर रेज्यूमे, आपका नाम, आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर इन कॉलेज, योर कॉलेज नेम, abstract out all those details because we don't need that, right? So that it's easier to review. So send in your resumes at this email ID, and then I'll record that video in the next couple of days. Okay, ठीक है, चलो, let me share the link to join, and you guys can switch on your cameras and join, and let's talk. Sneh, hey Sneh, how are you doing? Long time no see. welcome, thank you. So I've put the link here. If you have any questions, get your camera ready, join this link, let's talk. क्वेश्चंस इधर मत पूछो यार, लाइव आओ, बातें करते हैं थोड़ी सी। यहाँ क्या पूछ रहे हो? कम love you sir, I love you too man, thank you। बढ़िया। हाँ जी, हेलो सर, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बताइए। हाँ जी सर, आई हैव क्वेश्चन। अभी मेरा जो दोस्त है ना, वो उसकी कंपनी में डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट है, डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए। ठीक है। और वो कहता है कि इंटरव्यू हो जाएगा, वही कुछ सवाल का जुगाड़ हो जाएगा इससे। ठीक है। ठीक है। तो सर मेरा प्लेसमेंट भी आने वाला है, तो सर मैं कौन सी सैलरी पे जाऊं कि 4 लाख तक ठीक है एज अ फ्रेशर? 4 बढ़िया, जितनी ज्यादा मिल सकती है उतनी, और क्या। नहीं सर, अभी यहाँ पे मेरे सिटी में ना 4 का ही चलता है, ओके। कि फ्रेशर को 4 ही देते हैं। तो आपकी क्या राय है सर? See, 4 is not a bad salary, right? To ओके सर। start with, right? तो ओके वो अगर आपका फ्रेंड है तो आई वुड से वहां पे जाओ, टॉक टू हिम, गेट दैट, एंड देन चेक आउट योर कॉलेज आल्सो। ओके Okay. ओके सर, Claude is थैंक यू here. सर। He says English, please, for international audience. Sure, Claude. I'll try and manage both Hindi and English. So bear with me, but I'll try and cover both, Claude. Hang in there, buddy. Thank you for that. थैंक All यू सर। right. Thanks, Dev. Okay. All right. Naeem. Hi, Naeem. Good evening. Good evening. How can I help? Sir, actually, I am from SIT Pune. I am a first year student. Okay. But sir, actually, when I entered the college, I heard some things that it's very difficult to get into Monstack and all jobs because there are too much crowd in it, and you will not get a decent package and something like that. So I started researching about data fields and all, and so I developed an interest in that. And now my seniors are advising me that it's too difficult to get a data science job, and it's easier to get a Monstack job. So I'm actually pretty confused about job scenarios. Okay.
So I So need your guidance on it, sir. first your senior said it is difficult to get in MERN. Now they're saying it Man, is difficult to get in data science. data science, yes, sir. So what is And the since moral we of are the story? the moral of the story, it seems that we should not listen to seniors right now. Exactly my point. Nobody has a clue what is going on. Actually, right. That's what Right? somebody, because we don't have access to somebody who is in industry, so we have to listen to them only because they are our everything for right now. Fair, but see what is happening, right? Yeah. So, okay, so jokes apart, I'm not saying don't listen to seniors, but Yes, you sir. know what I'm saying, right? I So, can. jokes apart, what you should do is pick up one area. If you like data science, so firstly, you have to define what the hell is data science because it's a broad field, right? And you Right, sir. can search for yourself, right? Figure out what roles are there on LinkedIn today, how many jobs are there. Pick up a job description for a fresher, take out the list of skills which they are asking. Okay, sir. Okay, make that list and see how much of that do you already know or you don't know. What is the delta? Which year are you in? Sir, actually, I am in first year, the second semester, first, second. So you have time, man. You have 3 more Yeah, years. So but relax first. Chill. yes, sir. You have time. Do you have a girlfriend? Not yet, sir. Yeah, so focus there. All this will happen. Don't worry. Thank you, sir. Yeah, take your time. Relax. You have a lot of time. Keep your eyes and ears open. Figure out, I would say, in the first, second year, try different things. Right? Try Okay. some MERN stack, try full stack, try a little bit of DevOps, try blockchain, mobile programming, whatever. Try 5, 6 different things. Give them 2, 3, 4 months each, and then see which one you like. Okay, sir. You have I time. will Figure it follow. out. Relax. Chill, ma. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. ठीक है? Okay. Thanks, Vyom. Hey, Manish. Hello, Sovinder. Good evening. I'm Good from Pune. evening. Yes. So Okay. I need your guidance. Yes. Go ahead. Whether it is 1 second. Piyush. Piyush, please stop spamming here. I will not answer any questions like this. Okay, please don't put the same thing 20 times. It is not going to help. I'm reading all the comments. I'll reply to everybody. We are here for over an hour. But don't do these kind of things. Don't spam the chat. Please stop that. And anyways, I don't have the answer for your question. Best course for backend development. I have no idea, man. So I can't help you there. Sorry, mate. Sorry, Manish. Go ahead, please. Manish, you okay? there? Yes, yes, I'm there. So Yeah, yeah. actually, I want to You take. mind switching on your camera? Uh, no. Yes, yes, I'm there. Actually, I'm not in a position to switch on the camera. Okay, fair enough. Okay, go ahead. So I just want to know. I have the 10 years of experience. Mm-hmm. Yes. So whether it is a right time to move to abroad or continue in India, I just need your guidance. That's a bit after 10 years of experience. Yes. So you'll have to give me a bit more context here. It's too loose a question, right? I'll tell you why. Because at 10 years experience, what is your family situation? What's your finance situation? What's your parent situation? And this is all on the home front, domestic front. On your career front, what have you been doing so far? What do you think going outside India will give you, which staying in India you cannot get? I need some more context to be able to answer that. So if you don't want to talk here, you can send me a DM on LinkedIn with the context 1-to-1 and I can reply there. Okay, if you're comfortable talking here, let's talk. If not, send me a DM and then I'll give you a reply there. Okay. Okay. So I will. If you want to talk here, that's fine. If you're not feeling comfortable, send me a 1-to-1 message.
Okay, okay. I will send you one-to-one message. ठीक ठीक है, no worries. But I Thank need a you. bit more context to to answer that Yes, yes, question well. Yeah. yes, yes. I Otherwise, will provide you. generic gyan everybody has, right? It doesn't help you. Yeah. ठीक है. All right, Manish. Thank you. Thank you for joining in. Hey, Priyanshu. Good evening, sir. Good evening. Sir, actually, I am in a first year BTech, information technology. So I was asking that should I go in DevOps or should I go in MUN? Should DevOps is for freshers or not? So, if you go to my YouTube channel, there is a video where there are two guys in college in the third year. They have both cracked multiple DevOps internships. So, go and see that video, Okay, right? sir. So, check that out. The second thing, like I just said, if you are in the first year of college, you should try different things. Sir, Okay. I am fear of coding. So should I also go in DevOps? See, Does DevOps in DevOps, involves more coding? it does involve coding. Yes, you will not escape from coding, but it is not like so. It could involve scripting, it could involve infrastructure as code. So there is coding involved. In fact, anything you do today will have coding involved, unless you go to like, uh, you know, UX design or things like that. But I think you should first figure out why you are afraid of coding. Now, if you don't like coding at all, that is different. But try out one or two languages. Try out some easy languages and see if you can work for it. Because coding तो करनी पड़ेगी यार, option नहीं है कोई. Right? You might not be a full-time coder or developer, that is okay. But even in DevOps, you will have to write some shape or form of code. So get over that fear first. Okay. Sir. And like I just said, try out 2-3 different things in your first year, second year, first semester, so that you know which one you like, which one you don't like. Right? It is too early to take a call, should I do DevOps or not? Who knows, right? Yes. Try out different things, see what you like, and then you go from there. Okay, sir. Okay. All right. Thanks, Priyanshu. Okay. Hi, Banu. Yes, sir. Hello, sir. How are you, Hello, sir? Banu. Good, good. Very good. Thank you. Sir, can I get some interview tips for me, sir? Currently, I have completed Deloitte online test. Now I am preparing for interview, sir. Can I get some tips from you? Do you have some experience? Yes, sir. 2 experience I have taken, sir, from Cognizant Company and Infinite Solutions. 2 experience I have completed, sir. No. How many years? 4th year, second semester, sir. Oh, you're still I'm a in college. student. Okay. Yes, Okay. sir. Okay. Yes. Okay. So you can go on my channel. There is a dedicated video on interview questions. You can see that. There are a couple of videos on how do you introduce yourself, interview questions. All of that is there. Just go and have a look here. You'll find that. Okay, sir. If you have a specific question, then ask me. The interviewer asked me this, I'm not sure how to reply. That I can help you right now. Okay. But if you're looking for generic gyan, that is already there on the channel. You can go check it out. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. All right. Thanks, Banu. Hi, Sneh. How are you? Hi, sir. How have you been? I have been very good. So good to see you again. Okay, it's good to see you too. And I just wanted to share my feedback on your one of the video that is very excellent. I tell you Okay. why Sure, I sure. tell you Batao. because that's the truth. That's the truth. I Truth. have also shared it on my LinkedIn. That's on the mediocrity that you Yes. have Yes. I talked on. remember your post. Yes. Yeah, Tell me. that's the reality. And I wish I could have got that kind of a video 5 years back, but Mm, it took a bit of time for me to realize it on my own. But right. it is to the word correct. I mean, for the freshers and the people who are there in their early jobs, it's Mm-hmm. really a gold mine to see that video word by word and understand what you're talking about. Sorry No, no, it's about okay. Don't worry. It's okay. Don't worry. Go on.
So it's really a gold mine for them to understand what you're talking about. It's Mhm. very easy to settle down in your job. It's very easy to get rewards for the routine work that you're doing. But Mm. it's very important, if you want to keep yourself market relevant, it's very important. Don't settle down in your comfort zone. Just don't. It's very, 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 very important. I have 10 years of experience and I have been in the same project for 10 years. I have been rewarded many times. My client was very happy. They used to last year, before the contract ended with our company, Mhm. they gave me a monetary benefit out of that, which was not possible for the contract people, but they still gave it to me. So Mm. I was very much valued there. My work environment was very good. But in terms of work, Mm. it, if I want to put in extra efforts, if I suggest them to do something like automation, partial automations and everything, it was my own effort. They'll Mm. not come and ask you, give me this. It Yeah. was my effort that I'll have to put in and show them my work, and then show them the results that they can get, and then you will be appreciated. But Mhm. when you go beyond that, you go into the real market, you'll understand you're not there. Mm. So you have to always keep in touch. It's fine that you're being appreciated in your current project, you are valued there, you're appreciated, your work environment is very good. I seriously, my work environment was very, very good. My managers were very good, and that's why I was able to stick there for 10 years. 10 years. Yeah. I touch wood, they were really very good. My client side manager was very good. My company managers were very good. My lead, my manager, they have always supported me, beat any case. That's why I was able to continue there for 10 years with two kids. So Mm. yeah, that no, the managers were my reason, and the work environment was very good. I was appreciated, and that's why I could continue there for 10 years. But the reality is, if you don't check yourself in the market, you will be like you said, you will be only good into that area. Yeah. But once Yeah. you step out, you will understand what you lag behind. Mm. So always keep a check of your skills and upgrade yourself. That is your responsibility. That's not company's responsibility. That's your whole soul personal responsibility. And people need to understand. People who are who have just started working, they think, okay, my salary is just 4 LPA. So should I go with that? It's 5 LPA. Should I? No, that's not your current priority. Your current priority is learning. Mm. Learning is very important. That should be your thumb rule. If you're going to get something new to learn on, just jump. Don't think about money. Money will ultimately follow you up, but Okay. it's your Sneha, learning I and have a skill. question for you. Yeah, Now that project is finished, right? The ones that yeah, you stayed for 10 years, right? yeah, yeah, yeah. What did you realize when you moved out, and have you found the next project, or are you still Yeah, looking for? yeah. You've I got the next found the project. next project, Okay. but I have been preparing that for last 3 months. I gave the Mm. interviews outside my company, in Right. the current company with the different projects. And I tell you, the reality of the market is, let people talk that there is no job. There are jobs. Oh, yes. It's You just bet. that, yeah, it's just that you need to have that skill. Be prepared for that. I have not given a single interview in last 10 years. This was the Mm. first time that I gave back to back a lot of interviews, be it Mm. in my own company with the different projects or be it Mm. outside Mm. the market. I gave lot of interviews, and I tell you, my fear to give interview, or you can say touch to giving interview, Mm. that all I could overcome, and Mm. I'm really happy to where I'm standing today right now. The first and the Perfect. foremost thing is, you need to upskill yourself. That's very, very, very important to stay in touch with the market. The next thing is, don't sit and stabilize yourself, because after learning this, my next agenda is, for the next 6 months I'll keep on learning, for 1 year I'll keep on learning, and then again I'll try to upskill myself and search the market again. But I'll not lose the touch from the market this time. And there Good are point. Yeah. jobs. There are jobs. Just don't listen to people. There are jobs. It's just that you have to keep your foot in front and do your hard work. So, those of you who are in the live, there are 46 people right there, right?
So just to Sneha's point, I work for Zensa Technologies. You all know that. There are openings in my team right now. I am conducting interviews personally. So if somebody tells you there are no jobs, tell them to come and talk to me. I am recruiting people right now. If you know somebody who's a good DevOps consultant, a good DevOps architect, please send me your profile. Yeah, I will even personally working I'm on your taking LinkedIn interviews. profile, they are coming in. I mean, they are automatically coming to you, and they're asking if you're open for the job or not. I just accepted the offer a day before, and then I received another call the next day, and See, they there asked you go. me whether I was open for negotiation or not. But I said no. I've already given commitment somewhere, so I Yeah. just can't, you know, See, say there no you to go. them. So, Perfect. yeah. Thank you. Thank you, Sneh, for sharing that. I appreciate that. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for motivating us. And please keep making these videos, because tech videos you will get, tech guidance you will get. But what after that? How will you survive yourself in that industry? What will you do? What is your motive for next 5 years or whatever it is? It's really important. It makes sense when you're there in. So, Okay, yeah. Sneh, I have one homework for you then. One help I Okay. need from you. Okay. ठीक है, मुझे 3 वीडियो के आइडिया बताओ जो आपको चाहिए मेरे से. Okay, sir. सोच के बताना. ठीक No है. hurry. Whenever you Okay, sir. feel like Hmm. anything that you think, you know my content, you know how I create videos, what do you think will make sense? Tell Okay. me. Sure. ठीक है? Okay. ठीक. Thank you so much, Thank you, Sneh. sir. Thank you. Okay. Bye. Bye bye. All right, guys. This is also for everybody who's watching. Let me know what kind of, give me 2-3 suggestions of what videos I should make next. Right? I'm looking for new ideas. What do you want me to talk about? Go ahead. You can put it now, or you can send it over some message, any video, Hi, YouTube, sir. LinkedIn, wherever. Okay. Who's next? Hey, Mohammed, Ekant. how are you? Hello, sir. How are you? Good, good. Very good here. Thank you. Sir, first of all, sir, thank you for such guidance. You uploading the videos every time. Like apart from the technical aspect, you also mentoring us. So for that, I appreciate you, sir. Thank you, Mohammed. सर आई हैव टू क्वेश्चन सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई डेवॉप्स में अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेता है तो उस प्रोजेक्ट को वो शोकेस कैसे करे लाइक पोर्टफोलियो में हम कैसे अपने डेवॉप्स के प्रोजेक्ट को शोकेस कर सकते हैं You're saying in the resume or on LinkedIn or otherwise? like sir portfolio like in Portfolio. the like I yeah portfolio. So, first of all, if possible, put your code on GitHub. Okay. Right, so that we can look at the code. Secondly, if possible, make the application or whatever you have created, make it live, so Okay. that somebody can click on a link and see what you have done. Okay. Any pipeline that you've created, anything that you've created, if you can make it live somewhere for people to see, that is the best piece of pudding. Okay, sir. Right, because that is Yeah. reality. You don't have to use power words in the resume, this that nonsense. Nothing is required. Yeah. One one link of where I can see the application or pipeline or Then whatever you've I'm built. currently working and These two, and that's it. Simple. okay sir and sir Show me the yeah proof of the pudding, right? That is what matters. yes sir and sir my second Yeah. question is that sir like my past experience is from the full stack developer and when I was working in a startup so सर मुझे मौका मिला डेवऑप्स के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करने का काम करने का तो उस टाइम से मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया था कि सर्वर साइड मुझे काम करना है तो फिर मैंने सर लर्निंग स्टार्ट कर दी थी अपनी तो सर अभी मैं अपना पहला जॉब कैसे लूं like I have also a past experience of developer like around more than 1 years okay so उसे as a plus point use करके like सर आपने भी एक बार कहा है वीडियो में कि कोई अगर इंसान है जो डेवऑप्स में जाना चाहता है उसके पास
पास्ट एक्सपीरियंस एज अ डेवलपर्स की पास्ट एक्सपीरियंस उसके पास है, स्पेशली इन द बैक एंड, सो सर उसे एक प्लस पॉइंट मिलता है। तो सर इस पॉइंट को सर मैं कैसे यूटिलाइज करूं, और सर अपना पहला जॉब मैं सर कैसे लूं एज अ इंटर्न और एज अ फुल टाइम इन द डेवऑप्स फील्ड? तो आपने उसमें कुछ एप्लीकेशन बनाई है, कुछ कोड है अवेलेबल व्हाट यू कैन, या कौन सी लैंग्वेजेस में काम किया था? Sir, I was working in the startup which Catalyst, which is in Delhi. Okay, नहीं, So what yeah, languages or what were you coding in? Modern Stack, Stack. Okay. Java, So JavaScript, yeah. you create a single paragraph which says my coding experience. Okay, You start with your MERN stack experience and say, Okay. this is what I have built. So I understand how MERN stack code is written, how it is built, how it is deployed. okay, Okay. And then you Okay, okay. add other coding experience like some infrastructure of code, कुछ Terraform आता है, कुछ DSL आता है, जो भी आता है आपको coding में on the DevOps side. Combine that and put it together. okay, okay, sir. Right? So see, if somebody has got only and with lesser experience, right, 1 2 3 years experience, if somebody just says I know Terraform, I know Ansible, I know YAML programming, and if you come along and say, hey, I have also done development and I've built an application, I understand the entire SDLC, Yeah, you will software get more development. weightage, right? Yeah, okay, sir. Right, so Okay, use okay. it that way. Make Yeah, sense? okay, sir. Thanks a lot, sir. All Okay, right. sir. Bye. Thanks, man. Hello. Yeah, just 1 second. अजाइल गुरु जी, हायर तो थोड़ा डिफिकल्ट है आपको, बट इफ यू वांट टू ज्वाइन द स्ट्रीम प्लीज डू. आई विल पेस्ट द लिंक हियर one more time for you to join in. That will really help. If you're still around, please join the stream and I will make you one of the presenters. Please. Hanji, who was talking? Ekant, you've been there for a Yeah. while. Go ahead, please. Yeah. Hi. I've started following you for like a week now. Okay. I'm 41 years of old. As far as the experience is concerned, I'm a BCom graduate and I've been working with banking industry. No, in and out of it. Though I was never interested to become a banker. But whatever had happened in the past, I do not want to drag into it. Now I want to switch to IT. So being a banker, I don't have a great maths. It's very poor. I'm very poor in maths, but still I've been surviving nicely, getting rewarded, getting a high salary. Challenge is not there for me, and I do not like to continue with banking industry. I want to take a break and want to switch to IT. Okay. So could you please guide me through? I have searched something that it can be somewhere I can be a part of, get into the networking side or the developer side, the coding part, and everything. So I need a little suggestion from you that what are the best, all the I have seen couple of advertisements as well, like AI and chat bot and etc etc. So I'm big time confused that what am I Fair supposed enough. to do? Fair enough. So, Ekant, this will need a proper discussion, but I'll still give you some hints. Okay. Right? So, I'm assuming you have about 15 odd years experience. uh 9 years of experience with the corporate. Apart from that, yes, I was with my father in business. Achha, theek hai. So, about 9-10 years in corporate Yes, and true. in banking. Yeah, banking, Right? and yes, some a part of experience in tech support also. I served one of the largest world's laptop industry as a tech support a senior technician also. So But that then doesn't I help got now. interested. That will Yeah. not help now. Right? Yeah. So, in banking, do you have any domain expertise? Anti-money laundering. Anti-money laundering. Perfect. So, see, you can. Okay, let me put it this way. So, the honest answer is if you put your heart, mind, and soul to it, you can potentially learn anything. Hmm. Right? You can become a developer, you can become a DevOps guy, you can become an architect, whatever. Hmm. Right? Now, that is a very foo-foo high-level answer. Got it. Yes, that's the Because, reason I've joined your team. Yeah. right, it doesn't Not help you. together. Right? Yes. So, the deal is that whatever role you pick up next, it has to Mhm. build on your past 9-10 years experience. Hmm. Because you can't compete with a DevOps engineer like maybe a Shubham here who I see on the screen who's got 3 years experience. So true.
You can't compete with him, right? Yes. Because he will be technically better than you and at one third your salary. So true. So why will people hire you? Definitely. So that is a wrong battle to even fight. It is not the correct battle, Okay. right? Now you have to pick a battle which will leverage these 9, 10 years of experience and then hence will give you an edge. Mm-hmm. So now you shift your perspective and say, okay, these are my strengths. I know Mm-hmm. anti-money laundering. Within that, in AML, I specialize in AML for Europe. I'm just giving you Okay. examples, right? Mm-hmm. In Europe, I know these laws and I can possibly go into the auditing area. Okay. Or I can become a good product owner for companies which are building products for AML, Okay. right? Or I don't know if there are any certifications that you can do in that area. Yes, there are. I'm sure there are, right? Yes. And if it's possible to do them on your own, I would recommend you to do that. But first, look at some job opportunities which need an AML specialist, Mm-hmm. either for auditing or for compliance requirements or for consulting, because Mm-hmm. that will leverage your existing knowledge, Yes. and then you slide through. Okay. Right, because if you start from scratch again as a DevOps engineer, assuming you can pick up technology strength also, it doesn't build on your previous knowledge. It will be fresh, and the age factor is also there. So my Correct. main concern is the learning factor. I think that is not there with me. I can learn, though the Mm, age factor is there, because whatever I have done so far, I have earned and I've lived the life also. Now I correct. want to do something which actually interests me and where I feel happy. So Correct. in the 41 years of age, if I start, so by the at least 42, I will be able to learn something really in thorough way. Then Mm, will it be possible for me to get hired somewhere if I leave my previous experience? it's tough, not because just of age. Mm-hmm. That's one factor. It is a factor, but that's not the limiting factor. The Okay. limiting factor is your salary, your experience, your team fitment, all of that matter, Mm-hmm. right? Yeah. So plus if you start in completely fresh, then you come in with 0 or 1 year experience in that, Mm-hmm. but your total experience is 10 years. So the So true. fitment खराब हो जाती है ना, कैसे हाँ. करोगे? हाँ, और ये हाँ, because I've been also taking few interviews here, and that's the reason that I'm not on the video right now. Hmm, We also consider that it's really difficult because right now we need to coordinate and cooperate with the younger blood, and correct. when a person crosses a certain age, and hiring on the same fresher level, it becomes difficult for the other peers as well and for the company as well. So these criteria also comes into the picture. So Correct, it is I not understand. difficult. However, I can get into it and I can crack the deal if I want to do it. But I would have to put my heart and soul completely to it, and I would have to leave my existing package, which is there. I would not be able to get at least for next 5 years. Then, let's Correct. say around once I reach to 45. After that, I can expect something good. This similarly, what or maybe higher. That Hmm. depend on my expertise, what I gather. But I can't see, Mm-hmm. I would say that is a very long road, Mm-hmm. right? And AML is a field which still has relevance. It's Mm-hmm. not a completely outdated skill, right? And especially with new kind of regulations coming in ever so often, I think it is still something which you can pivot your career on. You don't have to start from scratch. I'm never a big fan of starting from scratch because it doesn't make sense. You Mm-hmm. lose on your last 10 years of effort. Shouldn't do that. Okay, the issue is here, Savinder, being honest with you, the reason I'm thinking first, I don't like to continue because of my personal interest that it doesn't interest me more. Second, what is actually happening nowadays, the in order to become this, it has been included in law perspective.
Hmm. People who are becoming law graduates in India, you know that the law graduates are very easy, and the law degree is the most common degree that everyone has, Hmm. apart from the CA, doctors, and ITs. Yeah. These are the three, four degrees which are really difficult for people to get and get into the admission perspective as well. But the Hmm. law degree is the one that even after retiring from a government job, a person can pursue and he or Yeah. she can get the degree. Yeah. So what is exactly happening here? The law, which I also do not like to get into it. So I've been struggling like for the last year completely. I struggle between this. So I initially wanted to get into the IT field, but of course, never had an opportunity nor the courage to took Hmm. that break. But now somehow I have lived that life completely and I've settled somehow. But the exigencies are always unwelcome, Hmm. and you cannot stop them coming. Hmm. So apart from that, everything is settled that way. Hmm. Hence, I'm thinking that whatever I've done in the past, I just want to do it for myself now, not for the family or not for something else. I'm Okay. being very candid here. Okay. Okay. So Fair enough. that's the much reason. And as for the law is concerned, I know law is just being a common sense. I studied in the school. I've been without the degree. I'm doing it. I Hmm. have people. I have my peers. They got the degree from the fancy universities, and still I'm Hmm. able to deliver better than them, Hmm. just because I'm able to put my heart and soul in. That's Hmm. the reason that I've started following your site, and I thought let's uh discuss with you that you will be able to help me to get something. But yes, as you initially said that it will take a literally long discussion, because this is just not would be the right platform to share Yeah. everything and to get everything. But just Yeah. to Yeah. insight, Let's I do just this. want to. Ekant, I understand what you're saying. Let's Hmm, do this. Why don't you send me a message on LinkedIn and let's chat hmm, there? definitely, I'll do that. Thank you. Because Yeah, there are nitty gritties which we shouldn't talk here. so true, so true. है ना? Yes, LinkedIn पे ठीक आप है. I'll मैसेज भेजो, send you. we'll set up something. We'll talk. Definitely. Thank you, sir. ठीक? Bye. Okay. All right, man. Okay. Let's add some more people. Hey, Rohit. Go ahead. Hi sir. Hi sir. यार कैमरा ऑन करो यार, ये क्या मतलब हुआ? सभी बिना कैमरे के हैं. हाँ, now Hi we sir. talk. हाँ जी रोहित, बोलिए. Actually, I am a front-end developer and working in a services company from last 2 years. And my Okay. question is that I'm looking to go in like in DevOps field and want to become a DevOps engineer. But I have doubt like how should I start in this? Like I doesn't know, like I'm getting stuck. Like what roadmap should I follow here? यार वो तो मैंने चैनल पे बना के रखे ना भाई, वीडियो देख ले. And so one more thing, and so people are saying that nowadays which cloud is better to do, like AWS, GCP, or Azure. So कोई फर्क which नहीं one is पड़ता. better? एक से स्टार्ट कर, कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, so स्टार्ट so स्टार्ट एट लीस्ट. yeah, okay, so and so one more question is that so the if I do the certification and also the is the certification is compulsory, or like we can just skip up that, or just work on the projects and showcase the interviewers to he can allow us to join as a fresher. If you can show enough good quality projects, Yes sir. then you don't need a certification. See, Yes what sir. does certification tell me? That at least you know this much. Yes sir. That is what it tells me, right? But if you Yes can sir. map it with good quality, good, not just copied from somewhere open source and change the header and नीलो को पीला किया, वैसा नहीं. If you Yes can sir. put good quality projects, then yeah, it is equal to certificate, maybe even better. Okay I sir, know thanks sir. personally people who don't like people who have a lot of certifications, because it doesn't Yes sir. guarantee anything, Yes sir, got it. right? And so one But more question, yes sir, you please continue sir. no, all I was saying is, but if you don't want to do certification, then you should have very good quality projects to back it up. Yes sir. Okay sir, answer one more question, and say I really like to show watch your videos. I'm following you from since 1 month, and I really Okay. like your videos. So I will if you make any individual video for on the a long video on the base of work pressure, like how to handle the work pressure. It's That really is good, in my really list. good. It'll come in Yes about sir. 2-3 weeks or so. It'll come. Yes sir. And so I really like to connect on you LinkedIn. So so please respond to my message. Sure. I will do that, man. I will anyways Yes do sir. that. Don't worry. Yeah. You don't Thank you have sir. to Thank you so remind me much. here. I will do that. Yeah. Thank you sir. Thank you so much. Okay. Thank you, Rohit. Hi, Shubham.
Hello, sir. How are you? Very good, man. Very good. How can I help? Sir, currently I work as a test engineer and I have Okay. 5 plus more experience as a manual tester. Hmm. So now I need to, I mean, it's not mandatory, but yeah, I wanted to switch and it's all a boom, right? DevOps is everything and everything, you know that. So last year I opt for a DevOps course, but I'm not able to, complete all the things, and Hmm. uh, it's really stuck right now. I don't know what to do next. I mean, should I change everything? Like 5 साल से जो भी किया है वो फिर से स्टार्ट कैसे करूं? एंड एज अ टेस्टर इट्स रियली हार्ड कि मैं डेवऑप्स में जाऊं तो फिर 5 साल का एक्सपीरियंस कैसे दिखाऊं और क्या फिर से शुरू करूं डेवऑप्स बनना बिकॉज लिनक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा इट्स अ लॉन्ग रोड मैप तो कैसे Okay. So स्टार्ट if करना I है या understand your question, you have 5 years experience, primarily manual testing. You wanted to get into DevOps, you took a course, लेकिन कुछ ज्यादा किया नहीं, राइट राइट? अब क्वेश्चन है कि अब क्या करूं? यही है क्वेश्चन? यस यस सर या तो मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के पर्पस से ही देखूं कि सेलेनियम और मतलब जा वो करूं फिर मतलब पढ़ना तो है ही एट द एंड वी नीड टू स्टार्ट समथिंग to upgrade my skills. So that I'm right now I'm ओके, फेयर a इनफ. little bit confused. गुरुजी आप तो परेशान हो गए सवाल सुन के ही. चश्मा नहीं उश्मा निकाल दिया. वो पुरानी पिक्चरों में दिखा देते ना, तो शिमला चला जा भाई, तेरा तो कुछ नहीं नहीं, हो सकता. I Would don't you want to want to take upset that people. question? I don't want to upset people. The thing is, it's an attitude problem rather than a skills problem. And I Okay. don't want to upset people in your channels. I'll keep quiet about No, it. no, it's okay. See, that is why I got you online, because I know you will say what people should hear, not what they need to hear. Okay. Right? They come here for a reason. This is unadulterated bullshit. So bring it on, please. Okay. Shubham, I'll ask you a simple question. Are you vegetarian or non-vegetarian? Non-vegetarian. Okay. If I ask you to go to the same restaurant and eat the same dish for the rest of your life, would you go? No, sir. No. And if your favorite restaurant stops doing all the dishes and they only serve rajma chawal, would you go to that restaurant every day or more often, or will you stop going there? I will start going there. Yeah, exactly. Why? Because they don't provide you multiple choices. Right. This is also happens in the recruitment industry. Why does Savinder or me have a good career? Because we are not skilled in one thing. We are multi-skilled. So rather than Right. positioning yourself that I want to switch, means you are not either good at what you did or that is not relevant anymore and you want to switch. That is not taken well by any TA or any recruitment manager. That's the truth. Position yourself different. Say, I was on the testing side and I was helping DevOps engineers to make sure that the delivery goes well. And I found it fascinating. I want to bring my testing skills and DevOps skills so that I can bring better value to the employer. How does that sound? Much better. Yeah. There's your answer. Become more employable, यार. It's very simple thing. It's a common sense. तुमको क्या Right, लगता right. है सविंदर को ऐसे ही 2 करोड़ रुपए दे देंगे क्या? नहीं नहीं, ढाई ढाई ढाई. हाँ, ढाई अच्छा नहीं. 2.5 करोड़ है. अच्छा. Yeah. और बोनस भी 2-3 करोड़ तो मिल ही जाएंगे और फिर सेक्रेटरी भी सुंदर होगी. सो हाँ, वो लकी प्रॉब्लम फेलो. है आजकल, सेक्रेटरी हाँ, सुंदर बहुत वाली. प्रॉब्लम है. तुम 10 जन का सैलरी ले लेते हो, सबके मार देते हो यार. ऐसा मत करो. हाँ, वैसे तुम कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं ना, मुझे हायर कर लो. मैं अलग से बात करता हूँ आपसे. Sorry, just joke. Sorry, The thing is, Shubham. Shubham, this is for not only for Shubham and other people who ask similar questions. I want to switch. Forget the word switch. I have repeated this in every bloody channel I go into. Forget the word switch. Become multi-skilled. Become better value for your employer. You get multiple skills.
you will get more money, you will have more enjoyable life. नहीं तो सिर्फ राजमा चावल खाते बैठना तो बैठो, मेरा लाइफ तो जिंदगी है। हाँ, वैसे आज मैं ब्रेड और अंडा ही खाने वाला हूँ क्योंकि मेरी बीवी श्रीलंका में है और मेरी बिटिया न्यूयॉर्क में है। Shubham, So, did you sorry get your about that. answer? Yes, sir. Yeah. All right. I hope this Thank you. answers the question. Yeah. Yes, sir. Thank you. All right. Thanks, Shubham. All right. Aniket, go ahead, please. Hello, sir. Hello, Guru, sir. So I have been working in DevOps field for more than 3.5 years, and I'm working for one of the major bank in India. But in my day-to-day roles, I have configured only CI/CD parts for the core banking applications, including UPI, CBS, NFT, RTGS applications. But I have fallen into a mediocre profile now. I lack certain skills like Kubernetes and Docker. As per your video, sir, I have started learning in public, and also I have started to showcase my work body. I have started my own blog documentation on Hashnode as well as in GitHub. So I would like to have a certain particular roadmap or path that you may suggest to me. What is your question? He needs a Some roadmap. profile Can you provide a roadmap? रोड मैप पे चल तो चुका है तू, और क्या चाहिए? Yeah. You are already on that road ना. Keep Yeah. walking, man. What else? Simple. सब कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, वो इशू हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका फुल नाम क्या है सर? सॉरी सर, व्हाट्स योर फुल नेम? अनिकेत काकड़े। ANIKET काकड़े, DE। या ओके, अनिकेत काकड़े। अनिकेत काकड़े यूट्यूब चैनल भी है क्या तुम्हारा? नहीं सर, अभी अच्छा, तक फिर नहीं है। ये वाला अनिकेत नहीं होगा फिर, ठीक है। हाँ, so the problem is if I do a Aniket Kakade ka search, I get nothing for you. Yeah, open Google and search for Agile Guru. I'll be number one hit on the Google. Why? क्योंकि मेरा नाम गुरु है, इसका मतलब ये नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। Yeah, the reason is I put on good content which is a solution. Don't write Hashnode में मैंने आज Git सीखा, आज मैंने एक मैनिफेस्ट लिखा. That is not skills. That is donkey work. नहीं सर, जो टूल्स पे मैंने काम किया है वो काफ़ी नीश है, जैसे कि IBM अर्बन कोड, अभी वो जाना जाता है IBM DevOps से, और कुछ ऐसे इनोवेशंस किए बैंकिंग के लिए जिन्होंने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट किया है फॉर आवर क्लाइंट। Yeah. तो वो मैंने I used to डॉक्यूमेंट work किया। for LBG, Lloyds Banking Group. So तुम जो tools बोल रहे हो ना, मैंने भी यूज किया है। Yeah, trust me, I have worked for all investment banks you can think of, and retail bankings, and Volkswagen, and Daimler, and Aramco, and I don't know, for FMCG. Why? The thing is, you are showcasing that you know the tools. Fine. Tomorrow tools will change. Underlining concept is take the bloody code, package it well after testing, and deploy it somewhere. That's what DevOps is. Well, that's part of DevOps, by the way. There is कभी डोरा मैट्रिक्स के बारे में सुना है तुमने? नहीं साहब। हाँ, वैसा करो, पहले डोरा मैट्रिक्स क्विक चेक करके एक टूल है, उसको जाके क्लिक करो और गूगल करके देखो. Understand the what and the why first. Why do you go to a restaurant? Tell me. To eat. No. Okay, you said you go to eat, right? अभी समझो आपने डिनर किया और मैं आपके घर आके बोलता हूँ चल यार वापस खाना खाने चलते, तो चलेगा मेरे साथ? क्यों? क्योंकि भूख नहीं है ना. So you go to a restaurant not to eat. You go to a restaurant to kill your hunger. And how do you do that? By eating. Think differently. Understand what and the why. लोग DevOps क्यों करते हैं? टाइम पास के लिए करते हैं क्या? $1 billion इंडस्ट्री नहीं. There is a reason behind it. उसको तुमने इंप्रूव किया है क्या? देखो, डोरा मैट्रिक्स जाके पढ़ो, फिर नेक्स्ट बार जब रविंदर जी दूसरी बार आस्क मी एनीथिंग में आएंगे ना, वापस आके बताओ कि तुमने क्या किया. यस सर, श्योर. आप मेरे ब्लॉग्स को जाकर देखो, उसमें मैं कभी नहीं लिखता आज मैंने गिट सीखा, आज मैंने कुबरनेटिस सीखा. नहीं, आज मैंने ये गलती की थी,
ये सब करने के बाद मैंने 30% पैसा बचाया, मेरा कभी डाउन टाइम नहीं होता, कोई भी आके डिलीट कर सकता है, मेरी जरूरत नहीं है, कोई भी आके जिसको एक्सेस है वो जाके डिप्लॉय कर सकता है, ऑटोमेटिक टैगिंग होता है. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी टूल्स, दिस इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग योर थिंग. So think differently, sir. Think differently. Okay, now up to you, Savinder. Sorry, I took out some of your time. No, you're on mute, sir. You're on mute. Savinder, you're on mute. Sorry. So, Aniket, tell me, how many blogs have you put up till now? So 2 on Hashnode. I have posted 1, and on GitHub I have posted 2. भाई 2 से कैसे होगा ना यार? Yes, I'm working on क्या it, so. चाहता है यार? है ना? मतलब अगर मैराथन भी भागनी है 2 दिन भागूंगा तो नहीं होगा ना यार. 20-200 करके फिर बोलना नहीं हो रहा. मैंने कौन से वीडियो में बोला है कि आप 2 आर्टिकल डालो एंड आपको कुछ हो जाएगा? कहीं नहीं होगा ना यार. तो you can't even say कि nothing is working. It's too premature to say that, right? Yeah. And also don't write. Yeah, sorry. Go ahead. Yeah, Sorry. I always say, if you're doing learn in public, 6 months even to judge, and after 1 year you should say whether it's working or not working. Nothing before 1 year. Put your head down and put good quality content. That is what learn in public means. It is not 2 blogs, it is not 20 blogs, it is 1 year of effort. Yeah, and what you are providing for other people to consume. Yeah. आप मेरा ब्लॉग्स कभी नहीं देखोगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आज मैंने ये प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया, नहीं. उसके लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं. या मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम था, ये सॉल्व किया है, ये यूज करो कोड और तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाएगा. So Aniket, long answer short, you're on the right path, but you've taken 2 steps. Walk 3 kilometers and then let's talk again. Yeah, that's a good answer. Okay, make sense? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thanks Aniket. Thank you, sir. All right, hi Akash. Hi Savinder sir. Hi Guru sir. Hi. So, Hanji, my yes. question is that I've been around having 4 years of experience in QA automation engineer, and I want to become a DevOps engineer. So I was thinking like what certifications I should do. Only one certification that would help me to land a job. Like there are multiple certifications, as you know, cloud practitioner, solution architect, and even we have in Kubernetes like certified Kubernetes administrator. So what one certification I should do for the job? Guru, Hello? you want to start and I'll pitch in. Okay. I'm going to be bloody rude about it. Okay, so for people who cannot take rude words, log off. Okay. What do you think is the right answer? Akash, by the way. There is something called Google. Have you heard about it? Yeah. Yeah. Can you go and search Google? What is one certification I can do to get a land? It will give you, or ask ChatGPT or go to Gemini or Claude and ask it. Did you try to do that? Yeah, but the thing is And like I tell you, the answer you will get is more ruder than me. yes. Yeah. So, number 1, a certification does not prove anything. Okay. For example, I have a marriage certificate with Radhika. Yeah. I have a certificate. इसका मतलब ये नहीं कि ना मैं खुश हूं करके. वो मुझे छोड़ के श्रीलंका गई है अभी. नहीं, वो agreed था, वो अलग बात है. Yeah. Certificate is only to confirm whether you are good or not. Yeah. अगर तुमने सिर्फ सर्टिफिकेशन पढ़ा है, सिर्फ डर के रट्टा मार के अगर तुमने एक सर्टिफिकेशन कर लिया, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर आपको लगता है एक सर्टिफिकेशन करके आपको जॉब जल जाएगा, तो मेरे पास तो 5 सर्टिफिकेट है, तो मेरे पास तो 5 जॉब होनी चाहिए ना. सविंदर से पूछे गोल्डमैन सैक्स का इंटरव्यू कैसा होता है करके.
11 राउंड के इंटरव्यू होते हैं, 11। वो भी मैंने 2008 में, अभी सुना कि 14 कर दिया इन लोगों ने। सोचो मेरी कितनी मारी होगी उन्होंने। सिर्फ एक चीज पे नहीं पूछते, बिहेवियर पे पूछते हैं, तुमने क्या अचीव किया, तुमने क्या। सिर्फ सर्टिफिकेशन तो तुमको टेक्निकल बताएगा ना, बिहेवियरल में कहां बताएगा। तुमने क्या आउटपुट दिया, तुमने बोला कि 4 साल में क्यू में हूं, तुमने अगर बोला होता कि मेरा कवरेज 100% था, जब मैंने चालू किया था उसमें 10% था, मैंने उसको किया, बहुत सारा मैनुअल था उसको मैंने ऑटोमेशन किया, उसमें कोई फ्रंट एंड का था जिसको मैंने सेलेनियम किया, और मैंने डेवऑप्स इंजीनियर के साथ बैठ के ये भी किया, फिर मैं मानूंगा ठीक है आकाश को कुछ आता है। एंड देन मैंने वही बोला, अभी 10 मिनट पहले मैंने बोला था, स्विच का नाम निकाल दो अपने दिमाग से पहले। तुम ये सोचो तुम्हारे पास मल्टीपल स्किल है तो मल्टीपल स्किल्स के साथ जाओ ना यार। ऐसे प्रोजेक्ट में जाओ जहां डेवलपर इन टेस्ट करके ये होता है, टाइटल होता है, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि लोग मुझे टेस्टिंग में दे नहीं रहे हैं जॉब, बोलते तुम बहुत सीनियर हो, तुम बुढ़े हो चुके हो। बोला ठीक है, अब मैं सविंदर जैसे जवान नहीं रहा ना, इसलिए प्रॉब्लम है ना। सॉरी अबाउट, सो द फन बीइंग द थिंग, what your thinking process itself is wrong. Just doing one certification will not end up your job. Even if you land up a job based on that certification, I'm sure you won't remain in job for long. You'll get very bored very soon. That would be my What was answer. I asking is that while going through the roadmap provided by Savinder sir, मैंने देखा कि लिनक्स करते हैं, फिर AWS करते हैं, DevOps डोकर, कुबरनेटिक्स, टेराफॉर्म, एनसीबल, ये सब चीज़ें करते हैं, पर उसके हाथ में एक सर्टिफिकेशन, तो अगर मुझे प्रायोरिटी देना हो तो मैं किसको दूं? तुमको जो खुश करने को मिले वही करो। See, Akash, I'll give you a real example, right? So I was recruiting for one company about 3-4 weeks back, right? They are one of my clients at work, right? And one of the discussions, the outcome of that discussions was, please do not bring us anybody who is putting certification first. When you share a profile, don't say this guy is AWS certified architect, blah, 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 blah. We don't give a shit about that. Tell us what the guy has done. Show us proof of pudding. If they have an open GitHub profile, show us that. If they have, work which is displayed in public, is there a link where I can go check that work? That is what matters to us more than any certifications. This is coming from a customer who's recruiting DevOps engineers 4 weeks back. Okay? And we've been categorically told not to explicitly highlight certifications, because they say we have seen people with certifications who don't know anything, because somehow they've managed to clear certifications. This is reality. Okay? Now what we are saying, Guru and I are saying, is the approach should not be what certification should I clear. The approach should be, in DevOps, there are these 20 things. I can't learn all 20 in one shot. There are videos on the channel where I've given you a roadmap, learn this, then this, then this, then this, then this. Follow that. Along the way, if you want to do 2, 3, 4 certifications, that's great. If you don't want to do it, but you can showcase enough proof of code, of application on GitHub, that will also work, provided it is good quality. It should not be one simple, DSL pipeline script of 5 lines. That doesn't help anybody. If you can show enough work, proof of work, so learning in public, creating proof of work, building up your GitHub profile, showcasing your work, that matters. Along the way, if you want to add 2, 3, 4 certifications as additional proof, that is great. You don't have to do it. That's the slightly long answer. Yeah. Savinder ji, चलो दोस्तों को दिखाते हैं. Can you share your screen for me, please? क्या देखना आपको बताओ? tech.agileguru.org जाके टाइप कर दो.
Yep. You're not sharing yet. नहीं, एक सेकंड में वो शेयर ही ढूंढ रहा था. Vishal, you're not audible, sir. Somebody who's Vishal Sharma. Your screen. Present नीचे रहेगा. हाँ, मिल गया. नहीं, मैं मॉनिटर करेक्ट ढूंढ रहा था. अच्छा, कितने हैं? 2 है, 3 है, 4 दो ही है. मेरे जैसे 4 नहीं है ना. हाँ. Okay, hit a URL. So this is my blog, huh? Akash, this is a good example. Yeah. Does it show you? Okay, click on the first one, effective GKE management. नीचे जो है, yeah. इसने simple diagram दिया है. नीचे जाओ, just scroll down. What is the problem we are trying to solve? और इसमें GitHub का लिंक दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है. Yeah. ज्यादा मैंने बकवास लाइंस नहीं लिखे हैं. इंस्टॉलेशन ये करना, ये चेंज करो, ये इससे प्रूव क्या होता है कि तुम इजीली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हो. इसका कोड भी उठा लो, मैंने सॉल्यूशन भी दिया है. इसको तुम यूज करोगे तो तुम्हारा एनवायरनमेंट आधे घंटे में सेटअप हो जाएगा. ये एक सॉल्यूशन है. और देखो कितने लोगों ने फोर्क करके रखा हुआ है. ऊपर जाके देखोगे तो भी पता चल जाएगा. 16 लोगों ने फोर्क करके रखा हुआ है. और स्टार्स भी मिलने शुरू हो गए हैं मुझे. मींस मेरा सॉल्यूशन कोई तो यूज कर रहा है. आपके गिटहब में किसी को स्टार या फोर्क हुआ है क्या आपका? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं. आप कोई भी मेरा देख लो. मैं ना ऐसे बकवास चीजों के लिए नहीं लिखता. आज मैंने ये एप्लीकेशन डिप्लॉय किया 3 टियर. नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है. जैसे मैं फिनॉप्स के बारे में लिखता हूं. हाँ, जेनकिंस के डीआर के बारे में कोई नहीं लिखता. कोई नहीं लिखता. करेक्ट. हाँ, ये देखो मैंने 0 कॉस्ट डीआर स्ट्रेटेजी बना के दिया है. और मेरा जेनकिंस ऑटो स्केल करता है. फका जब चाहिए होगा तब बना के देता है. आई यूज फ्यूज और करता है. और इसका नीचे जाके लास्ट डायमेंशन में देखोगे तो 1 पेटाबाइट का बैकअप है विच आई गेट फॉर £0. 1p दिख रहा है, 1.0p जो ब्लैक कलर में दिख रहा है. देखो बैकअप का 1 पेटाबाइट. फिर भी मुझे 0 कॉस्ट पे मिलता है क्योंकि मैंने क्या किया, जीसीएस बकेट को यहाँ माउंट कर दिया जिसका डिफॉल्ट कैपेसिटी 1 पेटाबाइट होता है. 1 पेटाबाइट है. लिखोगे तभी कॉस्ट आता है. तो लिख नहीं रहा है तो क्या करेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा. और हार्डली 1 MB लिखता हूँ, वो फ्री होता है. और रिस्टोर करने के लिए बटन दबाओ, रिस्टोर हो जाएगा. दिस इज द काइंड ऑफ सॉल्यूशन कंपनीज वांट. स्टॉप कर लो सर. थैंक यू. द थिंग इज, दिस इज द काइंड ऑफ हैश नोड और वॉट एवर यू राइट विल एलिवेट यू टू द नेक्स्ट लेवल. आज मैंने एक जैंगो एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया. वो तो मैं बैठ के चैट जीपीटी को बोलेंगे तो वो मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे देगा. तो तुम्हारी जरूरत क्या है मुझे? ठीक है आकाश, you got your answer? Yes. So Thanks, sorry, man. I'm not trying to be rude, but I'm trying to give you the common sense because unfortunately common sense is not common anymore. Sorry, one more rude answer. No problem. Okay, thanks Akash. Thank you, sir. Thank you. Hi Vikrant. Hello, sir. Good evening, Savinder, sir. Good evening, Guru, sir. Sir, am I audible? Yeah. You are audible, but we can't see you. It's Sir, okay, I am sharing my camera. Sir, like अभी currently like laptop के camera से connected हो, so video quality थोड़ी कम आ रही रहेगी. No, that's fine. So Don't it worry. works. Don't worry. Yeah. Sir, Go ahead. हाँ, I'm a third year student. Currently मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से हूँ. And then I have maintained a good CGPA. So currently मैं intern हूँ एक org में, मतलब basically it's a startup, and I am getting a stipend of around like more than 20K, and like I have won 4 hackathons. Sir, my question is like I have 2 questions. I know कि आपने दोनों के ऊपर वीडियो बनाई है, but जो मेरे सिलेक्टिव पॉइंट्स थे जो मेरे को पूछने थे वो मैं पूछना चाहता हूँ. सर,
फर्स्ट इज कि लर्न इन पब्लिक, लाइक आपने उसका पूरी वीडियो बनाया, मैंने पूरा देखा है, एंड देन और भी क्रिएटर्स का देखा है। सर मैं जब इंटर्नशिप में जो काम करता हूँ, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं उन लोग को पूरा अच्छे से डिस्क्लोज कर सकूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। एंड देन मेरे को लर्न इन पब्लिक का इंपॉर्टेंस थर्ड ईयर के बाद में समझा। उसके पहले मैंने जो भी हैकाथॉन्स जीते, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, वो सबको मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया है अच्छे से ऑनलाइन। सिर्फ गिटहब पे मेरे कोड्स अवेलेबल रहेंगे, सिर्फ ऐसा है। मतलब मैंने उसको अच्छे से अप्रोच अपना नहीं बताया कि मैंने क्या किया था। अब जैसे आप बोल रहे हो कि आप बताओ, लाइक आपने बोला था ना ज्ञान मत बांटो, लाइक देयर आर मेनी पीपल हु आर जस्ट देयर जो सिखा रहे हैं आपको, आप अपनी शेयर करो। सो मैंने पूरे वीडियोस देखे थे, बट मेरे को ये क्वेश्चन आता है कि पहले का जो हो चुका है वो मैं क्या डॉक्यूमेंट करूं। एंड देन मेरा सेकंड पॉइंट जो मेरे को पूछना है आपको, वो है मीडियोक्रिटी के ऊपर। लाइक मेरे को पता है आपने उसके ऊपर वीडियो बनाया, मैंने वो भी देखी है। सो थिंग इज कि लाइक जो बोलते हैं ना कि ब्रेन रॉट एंड देन बर्नआउट जो होता है, एग्जांपल कॉलेज, फिर इंटर्नशिप, एंड देन फिर ट्रैवलिंग एंड ऑल, फिर उसके बाद में एग्जाम प्रेशर, नोट्स, ये सब, उसके बाद में बर्नआउट हो जाता है। एंड देन या फिर हो सकता है मतलब जस्ट सोशल मीडिया और बाद में वो यूज करने पे बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, अपस्किल करने को नहीं मिलता है। आई नो कि लाइक वो पूरा माइंडसेट पे अफेक्ट होने लग जाता है कि मेरे को पता है, लाइक आई एम एट दिस पॉइंट ऐसा हो जाता है कि मैं दूसरे को एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो अच्छा करे, क्योंकि आई नो कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लाइक आई नो इट्स अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट, बट ये फॉर्म हो जाता है टाइम टू टाइम, क्योंकि हमको पता है हम लोग उतना एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं। एंड देन some other guy is putting there, maybe because of the उन लोगों को जो लेवरेज मिल रहा है उसके वजह से। बट स्टिल ये दो मेरे क्वेश्चंस थे। सो आई वुड बी रियली ग्रेट अगर आप लोग ब्लंट एंड ऑनेस्ट आंसर दोगे तो भी चलेगा, ब्रूटल भी चलेगा अगर आंसर्स। विक्रांत तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर। नहीं है ना? नहीं उधर भी ध्यान दे थोड़ा। एग्जैक्टली। अच्छा, सारा ठीक है काम सर। अभी कर लेगा क्या यार? इतना क्यों लोड ले रखा हाँ है? सर। नहीं देख सर, मतलब अभी जैसा नहीं बनी आपको ना समझ तो रहे हैं नहीं उतना बनने अच्छा वाली नहीं फिर है। बाद में। देख एग्जाम तो क्या हो होगा जाएगा ना, ना। देख वी वर्क टू लिव, वी डोंट लिव टू हाँ वर्क। एग्जैक्टली, इतना लोड। तू थर्ड ईयर में 20,000 रुपए कमा रहा है, सही है यार। मैं अब तुझे ये जान लेनी है मैं क्या? सोच रहा हूँ किसको गोद ले लेता हूँ, मेरा पैसा काम हो जाएगा। सर रिलैक्स। मतलब मेरा 6 है एंड देन ये समझ रहा हूँ। मतलब जस्ट 3 महीने बाद में प्लेसमेंट सीजन चालू हो जाएंगे। मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे नहीं होते, मेरे को ऑफ कैंपस ही ट्राई करना है। बट एट द सेम टाइम मेरे को मतलब कॉलेज भी मेरे को मेंटेन करना है। मेरा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस वाइज, 75% प्लस चाहिए अगर आपको अच्छी सीजीपीए रखनी है। सो आपको अटेंडेंस और अच्छी मेंटेन करनी रहती है। मेरा अभी 9.73 सीजीपीए है, सो मेरे को थोड़ा और अच्छा मेंटेन रखना ही है, क्योंकि मेरे कॉलेज में कैसा है कि जो कॉम्स डिपार्टमेंट है उसमें लोगों का सीजीपीए 9 के ऊपर रहता ही रहता है। सो वो एक चीज़ है। देन मेरे को जस्ट बैकअप के लिए वो चीज़ चाहिए। और सर मैं जिस ऑग में भी काम कर रहा हूँ उसमें मेरा 20K हुआ है, बट वो 6 महीने में हुआ है। मैं 6 महीने से एक ही इंटर्नशिप कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू स्विच, बट यही पे एक और चीज़ आता है कि मेरा कंफर्ट जोन, मैं मतलब कंफर्टेबल हो चुका हूँ वो इंटर्नशिप में। ऐसा है लाइक एट दिस पॉइंट, मतलब जो फाउंडर है उनसे तो एक बात होती है, लाइक टीम बहुत बड़ी नहीं है, 8-9 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है। एंड देन फाउंडर मतलब जो सबमिशन आते हैं इंटर्न्स या फिर ये सब के लिए, तो वो लोग मुझे भी हैंड ओवर कर देते कि यू कैन रिव्यू इट, आप 6 महीने से काम करो, सो यू कैन रिव्यू दिस। एंड देन जो मेन लीड है उसके साथ में भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है। बट मेन थिंग इज कि सर मीडियोक्रिटी, एंड देन सेकंड पॉइंट इज कि जो लर्न इन पब्लिक है बहुत ज्यादा खराब है मेरा। शांत ओके सर, शांत सॉरी। शांत शांत। ओके, थोड़ा सांस ले ले, यस थोड़ा सर। रुक जा रुक जा रुक जा। देख, put things in perspective. You still have 2 more semesters to go, right? यस सर। You are Right. you already are in an internship, you are making 20,000. You are the Right, sir. definition of not being a mediocre, right? Okay. तो थोड़ा रिलैक्स कर, यस आराम सर। से कर, सब हो जाएगा, घबरा मत। मीडियोकर नहीं है, यू आर नॉट अ मीडियोकर, आई कैन गारंटी यू दैट। या डेफिनेटली। राइट? सो सबसे पहले तो मीडियोकर जो होता है वो खुद को बोलता नहीं है मैं मीडियोकर हूं, राइट? सो ट्रैप में मत पड़, रिलैक्स Yes, कर, sir. थोड़ा माइंड ये सब से हटा के कहीं और डाल, थोड़ी पिक्चरें देख, थोड़ा घूम फिर, वो भी कर, वो भी जरूरी है। क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स सर एक्चुअली हाँ हाँ
नहीं मतलब आप बोल रहे हो पिक्चर, मेरा स्क्रीन टाइम यूसेज आप देखोगे मोबाइल पे बहुत ज्यादा है लिटरली। नहीं मतलब नहीं नहीं मैं मैं ये नहीं सब इसीलिए मैनेज बोला, करवा रहा हूँ लाइक। नहीं 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 नहीं, हियर मी आउट, हियर मी आउट। जब मैंने पिक्चर बोला, यस मुझे सर। ये मतलब नहीं था कि नेटफ्लिक्स पे जाके ओके। देखो। मैं बोल रहा हूँ 4 दोस्त लेके मूवी थिएटर में जाके पॉपकॉर्न देख खा के देख। स्क्रीन टाइम इज नॉनसेंस। यस सर। उसका कोई वो नहीं बोल रहा मैं। यस सर। रील देख के स्क्रीन टाइम बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। जब 4 दोस्त जाते ना मूवी यस सर। थिएटर, वहां पॉपकॉर्न खरीद के जो मजा आता है, और जो आते जाते बकचोदी करते हैं, उसका वैल्यू है। यस सर। And याद रखना यस कि सर। हमारा टेक्निकल स्किल ओनली is 50%. Yeah. Your soft skills, your spoken यस skills, सर। your behavioral skills also matters. ठीक है? You may be the best यस technical सर। person, but if you don't behave like a team player, you will not long in this industry for more, or you will not go up the hierarchy. Yeah, you'll not go up. Exactly. Correct. Yeah. तो ओके विक्रांत, सर। इन शॉर्ट, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट? यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यू आर रनिंग एट अ गुड स्पीड। वो स्पीड को कम मत होने दो, वो अपने आप बढ़ जाएगी। बट इतना प्रेशर मत ले। ओके। बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स कर, एक आध वीकेंड पे ऑफ ले। जो चीजें मजा आता है करने को, वीडियो गेम्स खेल, थोड़ा दोस्तों के साथ घूम फिर, वो भी कर, वो भी जरूरी है। और तू जवान लड़का है, जैसे सविंदर बोल रहा था, तो ऑन द अदर साइड भी देख यार, नहीं तो ऐसा हो जाएगा तू पैसा रहेगा और फिर बीवी नहीं रहेगी। थोड़ा लड़कियों से दोस्ती करो यार, यस सर। अच्छी होती नहीं, है। और मैं गर्लफ्रेंड नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा हाँ, हाँ। सॉफ्ट स्किल बहुत मायने रखता है। यस सर। तुम लोग है ना क्या करते हो, फटी में पढ़ते हो, टेक्निकल होते हो, और कॉलेज एक ऑफिस में जाते हो, उधर जाके लड़कियों से बात करने में तुम लोग की फट जाती है। लड़कियों से बात करते यस हो? सर। हाँ, हाँ 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 सर। हाँ गर्लफ्रेंड हाँ कैटेगरी सर। नहीं बोल रहा, हाँ, लड़कियां गर्लफ्रेंड दोस्त हैं क्या? कैटेगरी नहीं। नहीं सर, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। हाँ 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 सर, है जीरो हाँ, फीमेल वो इंटरेक्शन नहीं है। गुड। तो तो जीरो नहीं, मेरा लेकिन ये कहना है कि हाँ, सो माय सजेशन इज यू आर हाँ है, डूइंग गुड माइनर है, ऑलरेडी। माइनर है। हाँ, ओनली टेक्निकल स्किल डज नॉट मैटर। सर लर्न इन ओके पब्लिक का। ओके। ओके, गो अहेड। यस सर। नो, गो सर अहेड। लर्न इन पब्लिक का पूछना था, लाइक मैं इंटर्नशिप कर रहा एंड देन मेरे को ओके सर, मैं है ना लर्न इन पब्लिक के बारे में पूछना चाहता था। बेसिकली क्या है कि मतलब है ना, मैंने एक बार बीच में कुछ शेयर कर दी थी एंड देन फाउंडर का मैसेज आ गया था कि लाइक प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि लाइक ये चीज नहीं, तुमको टेक्निकलिटी शेयर करनी चाहिए थी, बिकॉज इट इज वन ऑफ आवर ट्रेड सीक्रेट। सो उस टाइम पे मैंने ब्लंडर कर दिया था, जस्ट 1 महीना होता स्टार्ट करके थर्ड ईयर के, एंड देन मेरे को लर्न इन पब्लिक करना है, बट मोस्ट ऑफ ऑल टाइम मेरा इंटर्नशिप में चले जाता है। एंड देन हाउ आई कैन बेसिकली लाइक शेयर कैसे कर सकता हूँ मैं अपने सारे अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन जो मैं अचीव कर रहा हूँ तो क्या मेरे होता है पर्टिकुलर ना, इंटर्नशिप का। सो टेक्निकलिटी तो शेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, तुमने आउटकम क्या देखा? क्लाइंट का नाम मत बोलो, जावा करके बोल सकते हो, नोड जेएस ओके। करके बोल सकते हो, बट हाँ। मैंने माइक्रो सर्विसेज 300 यूज करके ये मेडिकल क्लाइंट के लिए किया, ऐसा नहीं बोल सकते। बट यू कैन ऑलवेज राइट यस सर। रिडैक्टेड कंटेंट एज दे कॉल इट। या रिडैक्टेड कंटेंट कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, आई डू अ लॉट फॉर लॉयड्स बैंक, बट मैं लॉयड्स बैंक करके नहीं बोलता, मैं बैंकिंग क्लाइंट में मैंने पीएफएफसी, पेमेंट फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम में काम किया था। आई सेव $2.3 million पर ईयर। दैट यू कैन शेयर। हाउ डिड आई डू इट? आई विल नॉट डू। मैं ये तो ना बोलूंगा कि मैंने एआई मॉडल यूज किया था, ये किया था, मैंने सविंदर से पूछा था, वो सब नहीं लिखने का। You can give the summary Yes, also, sir. definitely. Uh, You can give the summary. Don't give the technical details, Okay. fine. But you can say, I developed this money and set up a pipeline for 20 projects consisting of Node.js and Java, which is fine. See, Vikrant, You're not a programmer, so okay. technically, Sir, if you last write question. about pipelines. Okay, sir. ठीक है? Yes, sir. Ping me separately. Let me see what else can Savinder, sir, I you were provide. saying something. Sorry? no, go ahead, go ahead. You Sure, had one sir. more Sure, question. sure, sir. ठीक है. Sir, you were saying something. I sorry, I interrupted you. No, no, Savinder, sir. nothing. Go ahead. You had one more question. Go ahead. Okay.
हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन वाज कि लाइक शुड वी स्टार्ट मेकिंग वीडियो कंटेंट, लाइक जस्ट टू लाइक मेरे पास में लाइक मैं सोच रहा था कि ना नाउ आई कांट शोकेस, लाइक अभी तो बहुत लेट हो चुका है, सो आई कैन शेयर कि हाउ माय एक्चुअल प्रोडक्ट वर्क्स, जो मैंने लास्ट टाइम पे बनाया था पर्सनल प्रोडक्ट्स, एंड आई कैन शूट अ वीडियो आउट ऑफ इट लाइक फॉर 2 minutes और 3 minutes, एंड देन उसको मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता हूँ, सो दैट वर्क्स राइट? लाइक अभी क्योंकि गिटहब पे ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है, एंड देन इफ आई जस्ट मेक अ लिंक्डइन थ्रेड तो मतलब नहीं रहेगा क्योंकि दैट टेक्सचुअल कंटेंट, बट इफ आई मेक द वीडियो आउट ऑफ इट, then it would be better for someone to judge कि हाँ इसने बनाया है, and then he's able to explain कि how it's working. Yeah, so just suggestion लेना था उस चीज Yeah, के ऊपर एक, absolutely. and then last Absolutely. एक क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड, उसी चीज से रिलेटेड सर, एक और चीज था वो जो वीडियो के ऊपर कि सर लाइक अगर मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं ना, तो वीडियो बनाते हैं, लाइक आप क्या सजेशन दोगे अगर मेरे को, अगर ना ये इनसिक्योरिटी फील होती है कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, लर्न इन पब्लिक होना चाहिए, लर्न इन पब्लिक करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में ऐसा रहता है कि जो हम लोग के पीयर्स रहते हैं ना, वो लोग बोलते हैं अच्छा भाई तू तो ये कर रहा है, तेरा तो ये हो गया वो हो गया। मैं ये बोलना चाह रहा था कि लाइक मतलब बहुत सारे लोग पीयर प्रेशर में मतलब मैं लेट पुल डाउन करते जानबूझ के, लाइक कि स्कैरसिटी माइंडसेट रहती है बहुत लोग के अंदर कि लाइक वो लोग बोलते हैं अरे ये तो कर रहा है, ये तो कर रहा है ऐसा, सो वो पर्टिकुलर इनसिक्योरिटी आने लग जाती है, देन फिर स्टॉप कर देते हैं। कट। तुम अपने क्वेश्चंस ना बहुत लंबी पतंग Sorry, छोड़ sir. रहे हो। नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, Okay. आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। अगर Sorry, sir. तुम तो मुझे सर बुलाते हो, सविंदर सर, सविंदर तुमको बोलेंगे सर तुम अच्छा काम कर रहे हो, अभी तीसरी मंजिल से उड़ी मार दो, तो तुम उड़ी मार दोगे क्या? है ना? नहीं मारोगे ना, तुम्हारी खुद की भी तो अक्कल है ना? No, sir. नहीं है? अरे ऐसा मत बोलो यार। Yes, sir. या तुम्हारी कोई नहीं ठान सर, खुद की अकल है, यस सर, वही मैं बोलना चाहता था, यस सर है। तुम्हारी, हाँ, तो तुमको मालूम है कि वो तुम्हारी तुमको तुम्हारी टांग खींच रहे तो खींचने दो। तुम ये मत सोचो समझ कि रहा हूँ तुम्हारी टांग खींच रहा है, वो तुम्हारी टांग तुम्हारे पाँव छू रहा है, ऐसे समझ लो ना। डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखो, और उनको खींचना है तो खींचने दो। जाके सेठ बोल दो ना, नेक्स्ट बार किया ना सविंदर सर से बोल के तेरी पिटाई करा दूंगा। ओके। अब मैं तो आगे Okay, पिटाई sir. नहीं कर सकता क्योंकि ठीक मुझे है, 10 घंटे का फ्लाइट समझ पकड़ना गया सर। पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता। और उसको स्ट्रेट बोल दो, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट डू दिस, इफ यू डू दिस अगेन आई विल कंप्लेन टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज। और तुम वीडियो बनाओ, कंटेंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई घंटा तुमको रोक नहीं सकता। हाँ, एज लॉन्ग एज वो लीगल हो। या किसी और का फोटो लेके, कैमरा लेके, उनका वीडियो लेके मत कर देना, दैट्स इलीगल। Yeah. So you need to do, make sure that thank you, sir. if you think something is good and it is not going into other people's intellectual properties, and what you have done is your own work, and you can keep the context around which is relevant to your job, no one is able to stop you anything. तुम वीडियो बनाओ या उल्टा टंगे रहो और उसका भी वीडियो लगाओ, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो वैसे वीडियो ज्यादा चलते हैं। उल्टे टंगे विक्रांत, एक चीज बताता हूँ आपको। थैंक यू सर। अगर आपको लर्न इन पब्लिक करना है ना, यस सर, तो मोटी चमड़ी डेवलप करनी सीख लो। ठीक है? थिक स्किन बोलते हैं, राइट? मेरा एक बहुत सिंपल डिस्कशन होता है मेरे एडिटर के साथ। अगर मुझे 50 कमेंट आते हैं ना यूट्यूब पे, उसमें जब तक 4-5 नेगेटिव नहीं होते, मुझे टेंशन हो जाती है कि सब लोग अच्छा कैसे बोल रहे हैं, मतलब मैं कुछ ढंग का कर नहीं रहा क्या? 2-4 को तो गाली देनी ही चाहिए। यस सर। मेरा शायद टीम से कोई होगा भी अभी लॉग इन, उनसे पूछो, अगर मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं आता, मैं जाके पूछता हूँ कि अरे क्या हो गया, हमारे वीडियो अच्छे नहीं चल रहे क्या? सब अच्छा कैसे बोल रहे हैं? कोई तो 2-4 लोग पीस ऑफ होनी चाहिए ना। अच्छा, तभी तो हम कुछ ढंग का बोल रहे हैं। किसी को बुरा लग रहा है, कोई बोल रहा है कि अभी तो 2-3 दिन पहले किसी का कमेंट आया कि तुम चीज बहुत रिपीट करते हो। मैंने हाँ रिपीट करते हैं, क्योंकि नेचर भी वही है, सन भी तो रोज उगता है, मैं भी रिपीट करता हूँ क्योंकि समझ नहीं आती लोगों को। तुम्हारे सवाल भी तो रिपीट होते हैं, तो मेरे जवाब भी रिपीट होते हैं।
तो अगर 2-4 लोग गाली दे रहे हैं ना, Yes, तो sir. अच्छी चीज है, मतलब कुछ ढंग का कर रहे हो, Okay, sir. सेलिब्रेट करो उस चीज को, देनी चाहिए. See, the people who criticize you Okay. are never better than you. Yeah. Good one. Yeah. Agree. Yeah. ठीक The है. people who criticize you are never better than you. Yes, sir. ठीक है Okay. विक्रांत. I think that's the golden sentence. Thank you, sir. Perfect. Thank you. Thanks, guys. Thank you. Okay, let us. Okay, Wahaj, is that correct? Is that how I say your name? Yes, sir. Yes, Hey, sir. Wahaj. The हाँ जी. camera on. Hi, Savinder Camera on sir. कर ले यार. Hi, Guru sir. Hi. Sir, actually, I'm not in a good condition to turn on the camera. I would like to go by Okay, voice. go ahead. Yeah. Go ahead. Sir, I have 4 years of experience as a support engineer. I have experience in networking, Windows, Linux, Active Directory, and Azure Cloud Administrator. So I doesn't have a good knowledge on programming side. However, I manage PowerShell. So my question is that with PowerShell knowledge, can I go in DevOps, and how can I become an expert like you guys, sir? Okay. I will take this one first, if you don't mind. Yeah. Yeah, sure, sir. Wahaj, what time do you get up in the morning? So actually, I work in night shift, sir. So I am a night owl. So Okay. in daytime I sleep and nighttime I work. Okay, fine. Okay. Let's say relatively. Yeah, relatively. Let's say you come back from work, 8 hours sleep, then you wake up. Yes, Okay, sir. so you have 16 hours in a day after your 8 hours work. Okay, let's assume travel takes 2 more hours. So you have round about 14 hours, out of which you sleep for 8 hours. So Yes, sir. 6 hours. What do you do for those 6 hours? Okay, let's assume 1 hour for eating, 2 hours for bakachodi and everything. So what is the 4 hours you do? I'm married, sir. I have 2 years of daughter, so I spend time with my daughter. Okay. You're not going to spend 2 hours, 4 hours with your daughter and wife. Trust me, I'm going to talk like L&D chairman. I'll tell you. Okay, you are saying this. I'm married for 20 years. No. I'm married from 2 years. Yeah, no, I'm telling about me. Yeah, Oh, I'm sorry, married for sorry. 20 years. I have a 19-year-old daughter. Of course, she now goes to university. She came back, बहुत बकरचोदी किया. उसके बाद वो भी तंग हो जाते हैं, बोलते जाना यार. Yeah. My suggestion is fix a time for yourself. No one gives a shit about you other than yourself when it comes to career. Your wife and your children will be with you only if you make them good money, good living conditions, and everything. Trust me, if you stop job, I'm sure your wife will leave you within 5 years. Yeah, sir. I agree with that. Yeah, Means okay. So not number leaving, one, but stop. yeah, No. that's true. Let me finish. Yeah. Sure, sure. Okay. So my view is companies only hire you to do their job. Number one. Mhm. Unless they see profit in you, they will not give a damn about your careers or your earning potential. Okay. Okay, sir. So the only person who can take care of their career is themselves. Ji. So stop fooling around and expecting your managers or your company to help you in your career. No. Go and learn it by yourself. And then, which is what Savinder says, learn in public, do more. Once your profile becomes good, either your own company's people will say, oh, ये तो ज़्यादा कर रहा है यार, इसको दूसरा कुछ करते हैं. नहीं तो there are 20,000 or 2 million more companies to hire you. Ji. So you mentioned you've been in server maintenance, all these things, PowerShell for 4 years. Yeah, Ji. correct? Ji, sir. Apart from maintaining servers, okay, I know you are not into programming. Why couldn't you have learned Jenkins or Kubernetes? Doesn't need infrastructure. There are lots of videos. You could have done a lot of those things. In the last 1 year, if you had done something, you could have done
I'm sure when your wife was pregnant with your baby, you couldn't go out that much. जी. And you still have to be at home because you have the baby in her tummy. Yes, Yeah. sir. So during that time, and now is the best time. Now that your baby is 4 months old, you said, correct? Yes. 4 months में तो वो सोने ही नहीं देगी तुमको. This is the best opportunity. Upskill yourself. Correct. मेरी बिटिया फर्स्ट 1 साल में मेरी तो पकड़ के धो दिया उसने. और आजकल तो 12-12 घंटे सोती है. उस समय तो नहीं सोती थी. जी. अभी हम बोलते हैं जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने, बोलते हैं डैडी आज छुट्टी. Yeah. So the thing is, take everything as an opportunity. जी. Yeah. Now I have got the time. Okay, I've just cleaned the diaper. Okay, now I have got 1 hour. Put on the music. Study, upskill. There is no other alternative. There is no shortcut. Shortcut only leads to death जी, sir. in your career. Sorry about the language. Savinder, please take over. Yep. So did you get your answer? Yeah, upskilling is the way in which I can go into DevOps, sir. Yeah. Yep. And my another question is, with the PowerShell knowledge, can I go in DevOps, sir? Do No. I have to learn Java or Python? No, you don't need to learn. PowerShell is just a CLI interface. It's a shell. Yeah, you need to Yes. learn some tool sets which will give you some outcomes. PowerShell does not give you any outcomes. It is just a shell to execute. So your thinking itself is wrong. Mhm. Yeah, my suggestion is PowerShell is not a tool. It's a medium where you can execute some commands to some tools to do something. PowerShell Yes. on its own cannot do anything. Okay, sir. Yeah. In So- PowerShell, you have to write PowerShell scripts to do something. Yeah. So Yes, you sir. can go on my channel. Yeah, there are a lot of videos where I've spoken about the entire journey. You can go have a look. That'll tell you what all you need to learn. Sure, Okay. Savinder. Thank you, sir. All Thank you, right. sir. Thanks, guys. All right, guys. We'll make it a little quick. We have to wind up in the next 9 minutes. Let's make sure we talk to everybody here. All right, Harish, go ahead, please. जय हिंद सर. जय हिंद. सर मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं. एक मेरे कम्युनिकेशन बेस्ड पे है कि मतलब मैं जैसे टेक्स्ट पे तो इंग्लिश में अच्छे से बात कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं किसी से कन्वर्सेशन फेस टू फेस करता हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत आता है उसमें. और एक मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं ज्यादा नेटवर्किंग भी नहीं कर पाता हूँ, तो उसके रिलेटेड कुछ सजेशन आप दे सकते हैं. एक मेरे चैनल पे मैंने 2 या 3 हफ्ते पहले एक वीडियो डाला है ऑन नेटवर्किंग, वो देखो. अच्छा. एंड सर एक मिनट रुक, बोलने तो दे. ओके ओके. You'll be surprised to know Guru is also an introvert. I am also an introvert. Okay. लेकिन हम स्विच ऑन कर सकते हैं अपने आप को, राइट? हम दोनों को स्विच ऑन करना आता है, वो सीखो. इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, राइट? लेकिन सिर्फ इंट्रोवर्ट होके जिंदगी नहीं चलने वाली है. थोड़ी देर के लिए एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, फिर वापस कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरी 2 वीक्स रात को 9 से 11 इंडिया टाइम में एक्सट्रोवर्ट होता हूं, ये 2 घंटे के लिए. क्योंकि ये बात नहीं करूंगा तो यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करेगा, तो करना पड़ता है. उसके बाद चुपचाप जाके सो जाता हूं या पढ़ाई करता हूं या जो भी करता हूं, राइट? तो या अपनी बिटिया के साथ खेलता रहता है. हाँ, जो भी है, बट अपनी बेसिक नेचर छोड़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए कैसे एक्सट्रोवर्ट बनना है थोड़ी देर के लिए, वो सीखना पड़ेगा. ओके सर. और कम्युनिकेशन के लिए आई हैव मेड दैट डेडिकेटेड वीडियो. इट इज एग्जैक्टली ऑन दिस. गो एंड हैव अ लुक. बट बेसिकली इट इज प्रैक्टिस. इट इज एज सिंपल एज दैट. यस सर. द मोर यू प्रैक्टिस, द इजियर इट विल बिकम. और सर एक जैसे मतलब अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो थोड़ा प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उसकी वजह से ना मतलब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है. तो मतलब दिमाग को खाली कैसे किया जाए? ऐसा कर, ये बॉटल है ना, हाँ, कोई भी एक प्लास्टिक बॉटल ले, उसके अंदर जो है ना उसको सब पी लेना. फिर क्या करना, उसका ढक्कन खोलना, या उसमें पानी डालना, बंद कर देना और जोर अपने सर पे मार लेना.
5-6 बार मारेगा ना तो बेहोश हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वापस उठ के कर लेना. It's called hitting your head with the baseball bat. जाके सोचो, कभी कभी ना तुम्हारा इतना तुम हाइपर होते हो ना, तुमको मालूम है मैं जब हाइपर होता हूँ तो क्या करता हूँ, चुपचाप जाके लेट जाता हूँ और बैठ के गाने सुनता हूँ. नहीं तो मैंने सविंदर से पूछो, लास्ट बार मैंने उसको कमेंट किया भेजा था, अब एएम में हुआ था, तो मैं नीचे बैठ के होम थिएटर में बैठ के देख रहा था. या आई रिमेम्बर. हाँ, मैंने नीचे होम थिएटर सेटअप कर दिया. 9.1 चैनल 1400 वॉट्स का होम थिएटर, एवरीथिंग वॉइस कंट्रोल, बैठ के सेटअप कर दिया. अब मैं नहीं देखता, मेरी बीवी देखती है. तो कुछ और ऑटोमेशन करना, कहीं और दिमाग लगाओ ना, या फिर गरम गरम पानी से नहाओ, मसाज करवाओ अपना, अच्छी फटी में नींद आएगी तुमको. ओके, You need to invest in yourself. You इसका cannot get आंसर results नहीं है, without investing yourself. राइट? सी, स्ट्रेस सबको है. मेरी भी लाइफ में अलग स्ट्रेस है, गुरु की भी लाइफ में अब नहीं है, लेकिन है. देख, राइट, ये मैनेज कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा. राइट, सबके तरीके अलग अलग है. पहले अलग मुझे अलग बहुत तकलीफ होती थी कि अरे यार मॉर्गेज कैसे करूंगा, ये करूंगा. अभी मॉर्गेज खत्म हो गया, और ये पैसे का क्या करूं. मुझे पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ओल्ड एज का प्रॉब्लम है. मैं तुम्हारे जैसा जवान नहीं हूं. अब मैं न्यू गर्लफ्रेंड तो नहीं रख सकता है ना. सो हर जन का अलग अलग से प्रॉब्लम है. सविंदर यूपी में आके मेरे से दारू पीना चाहता है, मगर वो नहीं कर सकता, और मुझे इंडिया आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है. So everyone has their problems. You have to solve it yourself. But just use common sense. Okay. We have to stop you because there are other people waiting. I think we have given you enough. Let's wind up. We have 5 more minutes. We have to wind up at 5 more minutes. Yeah, Sumit, go ahead. Hello, Assalamu alaikum. Hello sir, am I audible? Mohammed, I'll come to you in 1 minute. Sumit से पहले बात कर लेते हैं. Sir, am I audible? Yes, you are. So basically I'm in a hostel, so the background थोड़ा messy है, तो फिर मैं on नहीं कर सकता. ठीक है. So basically I am a college student, currently in Pune itself, and I'm actually in tier 3 college. Actually in third years, now is second sem. So I have joined as an intern in a company for 6 months offline, like complete in offline as a DevOps engineer only. Like I have learned everything like a Kubernetes, Jenkins, Ansible, Git, GitHub, and all the deployment, every CI/CD pipeline. I have learned that I'm going to do that work only from next month only. So basically only like I have only 2 questions. First question is like, what are the more things I can learn to uplift my skills like more higher? Like actually I'm learning in a tier 3 college, so यहाँ पे ज़्यादा कंपनी नहीं आती है क्लाउड रिलेटेड भी. So और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? ये आप इंटर्नशिप मिला है ना आपको? हाँ, अभी इंटर्नशिप मिला है. अभी आपका एक ही फोकस होना चाहिए. जिस कंपनी ने आपको इंटर्नशिप दिया है वो उनको आपको हायर करना चाहिए. ओके सर. उसके लिए मेरा भी यही सेम सीन था. मैं भी जब कॉलेज में था तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था. हाँ. क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे. हाँ. मुझे एक इंटर्नशिप मिला एंड आई ब्लडी मेड श्योर दे हायर मी. मैं वहीं सोता था, मैं घर ही नहीं आया 4 महीने. I have seen that your video. I have seen your video I've said and that you should before, tell. right? Yeah. I've said that before. Yeah. I made sure at that time, me and one of my friend, we were responsible for their server room. Yeah. Right? एक लैब था उनका. Yes. तो हमने ऐसा सेटअप कर रखा था कि उस लैब में कुछ भी हो जाए हमारे बिना वो सॉल्व ही नहीं होता था. Yeah. And we for nights we have slept in that lab. Okay. And they had no other option but to hire me. Okay sir. तो काय का घंटा कुछ नहीं, जो है वही कर. They have to hire you. Make it so obvious that there is no other option but to hire you. Okay. Thank you sir. So and the one last question. Guru had something to say. 1 second. 1 minute more. Okay. And once you get the job, perform so well that they will never let you go. Yep. Yes, sure. I'll give you an example. I came to this country on 10th of June 2001. Yeah. And I used to work for a company called Fidelity Investments, which is one of the biggest investment banks, investment houses, not bank.
After the contract was for only 6 months. मैंने सोचा लंदन में आके देखेंगे मजा नहीं आएगा तो इंडिया चले जाएंगे वापस. After 6 months, the business owner called me and said, Guru, we have a bad news for you. I said, yes, we want to extend your contract for 4 years. Oh. And after 4 years, you will be eligible for permanent residency. We will do everything for you. They spent lots of amount, and I got my permanent residency in 45 minutes. That's the only effort I had to put. Give my passport, give my work permit. Every other paperwork was done by solicitors. And they said that they got me on the cheap. Why? Because I'm so much valuable for them. Yeah. The word is valuable. If they see profit in you, they will उल्टे खड़े होके बोलेंगे आजा भाई कर. So whether you are doing internship or permanent, perform to your best levels, learn more, give better value, and you will be good. Thank you, sir. That's really inspiring, sir. Thank you. And sir, one last question: like, are there any chances of being an intern abroad? People are waiting. No, I think we have 3 minutes left. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. For sure. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Samir. Yeah, Mohammed, go ahead, please. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, सबसे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे. हाँ मैं जी. पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी आपकी मीटिंग में जब मैं आया था. सर प्लीज़ मुझे 3 से 4 मिनट दीजिएगा. मैंने कुछ अपने क्वेश्चन क्लियर करने हैं. मुझे टाइम नहीं मिलता दरअसल. मैं फिर वो जारी बात है आपको भी टाइम नहीं है आपके पास भी, तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा. आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा. आप ऐसा करो, नहीं तो मोहम्मद कासिम, आप ऐसा करो, आप मुझे इंडिया में काफी देर हो गया है. आप ऐसा करो, आपके पास टाइम है तो आप मुझे लिंक्डइन में पिंग करो. आप मेरे साथ 1 घंटा भी बात कर सकते हो. चलो, थैंक यू सर. ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी सर. नहीं, लेकिन कुछ अभी एट दिस टाइम मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ. 1 मिनट. हाँ, मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डाल देता हूँ सो दैट आपको मिल जाएगा. आप मुझसे बात करो ना, क्योंकि वी हैव टू बी फेयर फॉर एवरीवन. या ठीक है. हाँ, ये देखो लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने डाल दिया है, मोहम्मद कासिम, इन द चैट विंडो, प्राइवेट चैट में. या पिंग मी देयर एंड आई टॉक विद यू फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर. विल दैट सफाइस योर नीड? बट एट दिस टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम दें. थोड़ा 2-3 मिनट तो दें सर मुझे. हाँ ठीक है. हाँ चलो, बोलो. अच्छा सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा. मैं आईटी सपोर्ट में काम करता था. तो ये तारें वगैरह लगा दी, स्विच पे काम कर लिया, वीलैन पे काम कर लिया. तो उधर से मैंने उठ के मैंने डेवऑप्स में जंप मारा है. तो डेवऑप्स में पहले मैंने एडब्ल्यूएस को पढ़ा. तो एडब्ल्यूएस को मेरा पढ़ने का स्टाइल अब देखें कि मैं कैसे पढ़ता हूँ. मैं ना नोट्स बनाने लग पड़ा. वो टेक्निकल गुफ्तगू चैनल है तो उसको मैंने एक चीज़ नोट उनकी की. तो उसके बाद फिर मैंने देखा, मैंने 6-7-8 माह लगा दी हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर ही. नोट्स बनाता जा रहा हूँ. एडब्ल्यूएस तो काफ़ी सर्विसेज हैं, बंदा तो सीखता ही चला जा रहा है. फिर मैंने कहा अभी तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं. तो फिर मैंने ये सर का मैंने एक वीडियो देखा था, सविंदर साहब का. तो इन्होंने कहा था कि आप पहले क्लाउड को पकड़ें, उसको जोड़ें, फिर टेराफॉर्म को पकड़ें, उसको जोड़ें, फिर उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट करें, फिर देन मूव टू द जेनकियन पाइपलाइन या कोई और टूल्स पे जाएं. तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या नोट्स बनाना लर्निंग स्टाइल के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग पीछे से आते हैं, कहते हैं यार मैंने तो ये कर लिया, यार एडब्ल्यूएस के ऊपर ये सर्विस थी, जेनकिन के ऊपर ये था, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मैंने प्रोजेक्ट दे मारा. लेकिन मेरी सोच अभी वो नोट्स बनाने के चक्करों में वो एक सर्विस को मैं लिख रहा हूँ कि ये कैसे काम करती है, द लॉट ऑफ थिंग्स. तो एक तो ये मेरा शायद पता नहीं ड्रॉबैक होगा. अभी वो आप मुझे जवाब देंगे कि क्या है मेरे पास. और दूसरा कुछ और मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि कंपनी के अंदर, हर कंपनी के अंदर कुबरनेट्स नहीं होता. हर कंपनी के अंदर जेनकिन पाइपलाइन शायद होता हो या नहीं, लेकिन कंपनी के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें होती हैं. तो अभी मैं जिस कंपनी में गया हूँ उधर कुबरनेट्स नहीं है. बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस है, ठीक है. दूसरी कंपनी मैंने स्विच मारा है डेवऑप्स में ही. सैलरी ठीक है, अच्छी है, लेकिन ये है कि अब मैं थोड़ा सा अंदर से घबराया हूँ. यार ये चीज़ें डिफरेंट डिपार्टमेंट हो, एडब्ल्यूएस का डिपार्टमेंट हो, एजर का डिपार्टमेंट हो, कुबरनेट्स का डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट मुझे टास्क मिले, मैं उधर काम करूं. तो उस हिसाब से मैं कैसे ग्रोथ कर सकता हूं. ये पिछली लास्ट दफ़ा भी मैंने क्वेश्चन किया था सर से कि एक कंपनी के अंदर रह के डिफरेंट मल्टीपल चीज़ें कैसी सीखी जाए.
क्या हर दफ़ा स्विच करना ही ज़रूरी होता है? क्या लॉन्ग टर्म किसी कंपनी में रह के भी सीखा जा सकता है? तो ये ओवरऑल मैं अपना स्ट्रक्चर आपने सामने बयान किया, तो इस हवाले से सर मुझे बताइएगा। Okay, I'll take the first part, then Yeah, Savindu maybe. Okay. good. You can never learn everything. Huh? Mohammed, how's your English? If I talk in English, will that be okay for you? Or do you want me to talk in Hindi? सर टोटली हिंदी मैं इंग्लिश Okay, इज नॉट अंडरस्टैंडिंग okay, fine, okay. आप ये भी सब सर से कुछ क्वेश्चन था हाँ, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा. Okay, let's not talk waste time. आप सब कुछ नहीं सीख सकते. मेरे पास मेरा आईटी एक्सपीरियंस 25 इयर्स है, सविंदर का 24 इयर्स होगा मोस्ट प्रोबेबली. अगर आपको लगता है कि उसमें सब कुछ डेवऑप्स में आता है, मैं गुरु हूं ना तो मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता. The first thing is, don't go over technology. Be a very good problem solver. ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो. कल जेनकिंस आया या AWS कोड आया या क्लाउड डिप्लॉय आया, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं. बहुत लोग क्या करते हैं, जेनकिंस में जाके सोनार प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ट्रेवी का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और ये करते हैं, मगर और क्या होता है, पाइपलाइन बनाने में 1 महीना लग जाता है. तुमको क्या लगता है कि कंपनी वेट करेगी तुम्हारा 1 महीने से पाइपलाइन? मैं क्या करता हूँ, डेवलपर के pom.xml में ना सब कुछ इसमें डपका देता हूँ. चलो उसको मेवन क्लीन इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा अपने डेवलपर मशीन पे. वहीं फेल हो गया तो वो कमिट नहीं करेगा, और कमिट करेगा तो पकड़ा जाएगा, फिर हम उसकी पकड़ के धोएंगे. तो उसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट. पहले ना लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, पहले उसको समझो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, उसके बाद अब जेनकिंस यूज करो या क्लाउड बिल्ड यूज करो, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता. मुझे कभी कभी बोला जाता है ऑन प्रेम में जाके मर्सिडीज के लिए काम करो, वोक्सवर्ग में जाओ, और कभी कभी बोलते हैं सऊदी अरेबिया जाओ. तुमको क्या लगता है ये सब पढ़ के जाता हूं मैं उधर? नहीं, मेरे फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं, और नहीं पता है तो सविंदर से पूछ लेता हूं, मुझे कुछ घबराहट नहीं होती. देयर इज नथिंग बीइंग शेम ऑफ नॉट नोइंग. I used to work for some of the best investment bank. गोल्डमैन सैक्स में आधा टाइम वो क्या टेक्नोलॉजी तो छोड़ दो, साले वो बोलता है कभी ये कर नहीं सकते. वो मैंने बोला मैं बताया भी नहीं, फिर उसके लिए हम टेस्ट लिखते हैं. आई कम फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, बट आई एम नॉट a genius in cloud, but I work for some of the best companies in the world for cloud. They don't see whether I'm a cloud expert or not. They look at me कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो क्या, एंड आई एम वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन माय कंपनी, इन माय रीजन. व्हाई? मैं प्रॉब्लम उठाता हूं, क्लाइंट को बोल देता हूं मुझे देखना पड़ेगा, गिव मी 1 डे. रात को बैठ के आराम से पढ़ता हूं, गाना सुनता हूं, सविंदर से बात करता हूं. रिलैक्स करना सीखो पहले, और फिर वाकई में कस्टमर को अपडेट करता था, मैं कर रहा हूं, अभी अच्छा सोल्यूशन नहीं आया है. एक बार अच्छा सोल्यूशन आ गया उसको डॉक्यूमेंट करके दिखाओ और बोलो ये कर रहा हूं. एंड दिस इज टू योरसेल्फ आल्सो, डॉक्यूमेंट योर लर्निंग. सर अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे यही कहा हुआ है कि हम डेटाबेस कौन सी लें, एजन हमें कौन सी अच्छी डेटाबेस देगा, हमने .NET की एप्लीकेशन को क्लाउड पे लेके जाना है, VM कैसे हमें बाय करनी पड़ेगी. तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में उनका जो है ना बड़ा रोल है. वो कहते हैं इसको देखो, मैं अभी वो पढ़ी जा रहा हूँ, पढ़ी जाऊँ, उनको जाके थोड़ा बहुत रिपोर्ट देता हूँ, सर जी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं. तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि सर एक कंपनी के अंदर रह के कुबरनेट्स पे और कैसे ये सारा चीज़ें आए, क्या कंपनी शिफ्ट करनी चाहिए 6 भाई, महीने? मैंने अभी आंसर दिया 10 मिनट के पहले. नो कंपनी इन्वेस्ट इन यू अनलेस दे सी प्रॉफिट इन यू. जब तक तुम्हारे को देख के उसको प्रॉफिट नहीं मिलता, तुम्हारा दे डोंट गिव अ डैम अबाउट यू. तुमको क्या लगता है मैंने कुबरनेटिस, मैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक में तुम ना अपने सिस्टम को छोड़ के कुछ भी हाथ भी नहीं लगा सकते. मैं तो यूरोपियन गवर्नमेंट के लिए काम करता था, वहां ईमेल पढ़ने के लिए अलग से पीसी होता है, तुम्हारे डेवऑप्स के लिए अलग से लैपटॉप होता है. तो तुमको क्या लगता है? और मैं 1998 में कहा था, उधर तो क्लाउड भी नहीं होता था. तो तुमको कैसे, मैंने क्या किया, 40 लाख रुपए खर्च करके अपने गैराज में 5 सर्वर लिया और बैठ के वहीं से एंसिबल भर के कुबरनेटिस सीखा मैंने. और तुम्हारे लिए किलर कोडा है, killer.sh है, गूगल का स्किल बूस्ट है, AWS का स्किल बिल्डर है, इतने सारी चीजें फ्री में है यार.
उधर जाके सीखो, कोड बनाओ, सॉल्यूशंस बनाओ, सिर्फ बैठ के कॉपी एंड पेस्ट का काम मत करो। तो सर सॉरी, आवाज़ आपकी थोड़ी कट रही थी। सर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या कहा था? जो मैं नोट्स बना रहा था उस हवाले से आपने क्या कहा है? नहीं, नोट्स बनाओ, उस तुमको हवाले से मुझे कैसे बताएं कि सीखना है वो लर्निंग तुम्हारा स्टाइल मेरा क्या प्रॉब्लम होना है। चाहिए। तुमको कैसे सीखना है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हर जन अलग से सीखता है। जैसे मैं कब सीखता हूँ, जब मैं नहाता हूँ ना, सब आइडियाज मुझे तभी आती हैं। और जब मैं दारू मारता हूँ तो और अच्छी आइडिया आती हैं। और जब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो कोई भी आइडियाज नहीं आती है, क्योंकि मुझे बैडमिंटन में कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मेरी ठुकाई हो जाएगी। तो हर जन के लिए एक टाइम होता है, ठीक है। और नहीं, पहले ना मैं डरना पहले भूल जाओ। राजू रस्तों की मत बनो, रांचो बनो। सर मैं आपकी में बात थोड़ी टैलेंट समझा है, नहीं थोड़ी। नहीं, वेट, वी हैव टू फिनिश दिस ऑफ। आप में टैलेंट है, या यू आर जी डूइंग गुड। पहले डरना भूल जाओ। नंबर 2, या हाउ यू लर्न डजंट मैटर, व्हाट यू लर्न मैटर्स, व्हाट स्किल्स यू हैव मैटर्स। तुम्हारा कंपनी तुमको नहीं देता है, जाने दो। एक रेस्टोरेंट में गए, वहां कुल्फी नहीं मिली, आइसक्रीम नहीं मिला, दूसरे रेस्टोरेंट में यहाँ खाना खाओ, मेन डिश खाओ, और दूसरी जगह गए कुल्फी खाओ, कौन मना कर रहा है तुमको। या सविंदर के यहाँ जाओ, अच्छी लस्सी मिल जाएगी तुमको। यू आर ओवर थिंकिंग, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, यानी कंपनी शिफ्ट नहीं करनी चाहिए, बस उधर रह के लर्निंग नहीं, करें ऐसा और आगे। नहीं, तुम्हारा हर जन का अपना अपना डिफरेंट होता है। इस 24 साल में मैंने 16 जॉब चेंज किया है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। अगर मुझे पैसे के लिए चाहिए था तो मैं गोल्डमैन सैक्स क्यों छोड़ता। फटी में पैसा दे रहे थे मुझे, 2 साल में छोड़ दिया। फिर यूरोपियन गवर्नमेंट के लिए काम किया, हर मंडे को फ्लाई करना, थर्सडे को वापस आना, फ्राइडे को वापस, मंडे को फ्लाई करना। 3 साल किया। मेरी बीवी ने बोला तू अफेयर कर रहा है क्या कहीं, चुपचाप घर में ही बैठ, लंदन से ही काम कर ले। और मेरी बेटी ने बोला डैडी आप, मैं हर दिन देखना चाहती हूँ। मैंने वो जॉब छोड़ दिया और वोक्सवैगन का हेड बन गया। और मैंने बोला मैं लंदन से काम करूंगा, वंस इन अ वीक मिल्टन कीन्स जाऊंगा बस। बोले ठीक है। सो द थिंग इज, इफ यू हैव द स्किल्स and if you learn on your own, companies will come and take you. काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। और ये काबिल तुम कैसे बन सकते हो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट यार ये प्राइवेट चैट में ना मैं लिंक्डइन अपना प्रोफाइल कैसे दूं यार, समझ मैंने में अभी नहीं। पोस्ट किया। हाँ किया है क्या, ठीक है। हाँ अभी किया मैंने। अच्छा, थैंक यू। यप। और बताइए सविंदर सर, कल का क्या प्लान है? बढ़िया सर, कल का कुछ नहीं, कल से फिर दुकान शुरू, और क्या। अच्छा, सेंसर का दुकान है। और क्या। आज तो मेरी बहुत ठुकाई हुई। क्या हुआ? बैडमिंटन में 6 गेम में 4 गेम हार गया। अरे चलो कोई बात नहीं, होता है, दैट्स फाइन, पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं, क्योंकि ना वो सुबह सुबह बीवी ने अंडा ऑमलेट नहीं बना के दिया। उससे फर्क पड़ता है। फिर बहुत तो मैंने सिर्फ ब्रेड और टोस्ट खा लिया था, तो फिर वो नहीं जमा उधर जाके अच्छी चलो खासी कोई बात ठुकाई नहीं, हो जाएगा सवाल। हाँ, तो मैंने ठीक है। सोचा कि अभी मैंने सोच लिया कि नेक्स्ट वीक भी थोड़ा मार खा लेता हूँ, फिर वापस बीवी के आने के बाद थोड़ा अच्छा और खेलेंगे, है ना। परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू गुरु, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। चीयर्स गाइस, बाय।